एवढं हेलो ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स है, आवाज आ रही है आपकी तरफ? माइक ऑन करके प्लीज रिप्लाई। हाँ शक्ती माइक ऑन कर तिकडचा तिकडं। हेलो ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स है, आवाज आ रही है? जी हाँ। अरे बात रे। ऑनलाईन पार्टिसिपंट थोडं बोला, मला तुमचा आवाज चेक करायचा आहे. तर आवाज येतोय तुमचा. तुमचा यायला सर, आता काही प्रॉब्लेम नाही. हॅलो हॅलो तर आवाज येतोय. आवाज व्यवस्थित येतोय का ऑनलाईन पार्टिसिपंट्स? सर थोडं आवाजात क्लिअरिटी नाही सर, थोडी आवाजात क्लिअरिटी नाही. एक मिनिट. चेक चेक हे दे इकडे. हॅलो एक मिनिट, मीटिंग लेट झाली. काय हवी लिंक? एक मिनिट. साऊंड्स sound speakers तिथून त्या याच्यावरून आवाज फुल आहे का? नाही नाही. एम्प्लिफायर मधून आवाज तिथून कमी जास्त आहे का? USB साउंड कट दो.
आवाज एवढा बारीक काय येतोय? केबल फॉल्टी काय माहिती. सर स्पीकर चेक करत बघ. सर यांचा स्पीकर आहे का? असा स्पीकर आहे का? आहे का विचारा बघ. ऐसा स्पीकर है आपके पास? याचा काय प्रॉब्लेम होतोय का? सर स्पीकर चालत नाही. Nice cancellation है. मोबाईल मध्ये कधी कधी रेकॉर्डिंग करतो. थ्री पॉइंट फाइव mm. लाला कुठे गेला? लाला कुठे गेला? अजून बोलू. ठीक है का? अजून काय काय लागेल? माईक लागेल, तर कल्पना
नमस्कार। चलो शुरू करते हैं। आप बोलोगे भूषण सर को इतनी तकलीफें होती है तो हमें कितनी होगी या हमें कितनी आएंगे? राइट। एक्चुअली आपका सेटअप अलग है और मेरा सेटअप अलग है। प्रॉब्लम मेरे सेटअप में था, क्योंकि आपका सेटअप जो है, आपको जो कुछ भी करना है तो आपका सिंगल सेटअप है, 2 लैपटॉप्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, इतना ही सेटअप है। लेकिन आपका यही सेटअप मुझे ऑनलाइन दिखाना है, तो इस वजह से जो एक्चुअल कनेक्टिविटी इशू है, इसे ऑडियो राउटिंग एंड वीडियो राउटिंग कहते हैं। ये टेक्निकल थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग है, जिसमें हम हाइब्रिड कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो टेक्नोलॉजी है यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहां पे सिंपली मैंने एक लैपटॉप रख दिया होता है यहाँ पे, और लैपटॉप से मैं जूम को या गूगल मीट को अगर मैं कनेक्ट कर देता, तो आपको जितना अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है वैसे ऑनलाइन वालों को नहीं दिखाई देता। ऑनलाइन वाले यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये उस साइड में एक लैपटॉप है, इस साइड में लैपटॉप है, मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों को उतना परफेक्ट नहीं दिखाई देता है जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो उन लोगों को भी उतना ही डिटेल में समझ में आया कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरीके से ये कनेक्टिविटी हो रही है। इसी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, थोड़ा टेक्निकल वो हार्ड पार्ट है, लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी फॉर दैट कि ये सब एक्चुअली इतना टेक्निकली ये फर्स्ट टाइम है एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक सेटअप यानी स्टूडियो एक्चुअली हॉल में लगाया जा रहा है, और स्टूडियो कैसे लगता है और उसका एक्चुअल आउटपुट कैसा आता है ये ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। एक तो सवाल होता है कि स्टूडियो हॉल में तो लगाना फार मोठा चैलेंजिंग जॉब है। स्टूडियो जो होता है हमेशा वो क्लोज रूम में होता है, हमने वो स्टूडियो कहां पर लगाया? हॉल में। और दूसरा चैलेंजिंग जॉब क्या है हमारे लिए? ये पूरा का पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेंगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, अब सिस्टम क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। टीचर को क्या करना है? टीचर को सिर्फ खुद का लैपटॉप और माइक संभालना है। टीचर की जो टीचिंग है, कल हमने क्या देखा? कल हमने क्या देखा कि एक टीचर है, उसको खुद का लेसन प्लान बनाना है, उसको खुद को क्या करना है, नोट होगा, पीपीटी का सॉफ्टवेयर होगा या माई व्यू बोर्ड का सॉफ्टवेयर होगा, वो उसे चलाना है। तो वो सॉफ्टवेयर जैसे वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन हमें कैप्चर करना है अलग वाले लैपटॉप पे। हमने डायग्राम में कल देखा था, डायग्राम में ये वो मिक्सिंग वाला लैपटॉप जहां पे मिक्सिंग होने वाली है। अब टीचर का लैपटॉप मैं आपको प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो टीचर का खुद का लैपटॉप है। उसका अगर क्लासरूम में बिठाना है तो क्लासरूम में क्या होगा, ये जो डायग्राम देखा था हमने, टीचर का जो लैपटॉप है वो 2 जगह पे कनेक्ट हो रहा है। कहां पे? एक प्रोजेक्टर पे और दूसरा मिक्सिंग लैपटॉप पे। तो यहाँ पे और एक प्रोजेक्टर नहीं है हमारे पास, ये तो वो भी लगा देते कि इस लैपटॉप पे क्या चल रहा है। ओके, इसका आउटपुट हमें एक और एक प्रोजेक्टर लगा देते। तो यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे टीचर है और उसके प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन चल रहा है और सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। टीचर को क्या संभालना है? टीचर को ये माइक संभालना है, ये माइक कनेक्ट हो जाएगा टीचर को, और उसकी जो खुद की पीपीटी है वो यहां पे चलेगी। पीपीटी है, जस्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है। अब यहां पे सामने क्या है? सामने यहां पे एक मिक्सिंग वाला लैपटॉप है जिसको हमने क्या क्या कनेक्ट किया है वो पहले समझ लो। सबसे पहले एक लैन केबल के जरिए, नेटवर्किंग केबल पता होती है आपको, लैन केबल के जरिए हमने क्या किया है, ये लैन केबल इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दी है। पता ना लैन की केबल? हाँ, लैन केबल क्या की हमने, पहले वाला लैपटॉप और दूसरा वाला लैपटॉप इस दोनों में कनेक्ट कर दी। ओके, माइक जो है, ये माइक
कहां पे कनेक्टेड है? ये मिक्सिंग लैपटॉप को कनेक्टेड है, ये माइक। ओके, हमें कौन सी चीजें चाहिए? टीचर का आवाज है वो हमें यहां से मिल जाएगा। ओके, टीचर के लैपटॉप पे जो कंटेंट है, उसके स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है, वो कहां से मिलेगा हमें? वो लैन केबल से मिलेगा। ये वाली लैन केबल, लैन केबल के जरिए हमें इस टीचर का जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो लैन केबल के जरिए मिलेगी। टीचर को जो शूट हो रहा है, टीचर को शूट करने के लिए यहां पे कैमरा है। ओके, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम कैमरा के सामने, कैमरा के लेंस में देखकर बोलते हैं तो ज्यादातर भूल जाते हैं हमें क्या बोलना है। होता ना ऐसे, कैमरा के सामने हो आप और आपको बोलना है, चलो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक, इसमें ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये हमारा टॉपिक है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, लेकिन थोड़ा अटक जाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में हमें मूवमेंट करते हुए एक प्रेजेंटेशन की कुछ तो एक ट्रेनर है, स्टूडेंट का हमारी तरफ फेसिंग, हम स्टूडेंट की तरफ देख रहे हैं, स्टूडेंट की जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन से हमें बताते हैं कि हमें आगे क्या बोलना है, और हम वो कारवा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन जब भी हमारे सामने कैमरा आता है तो हम अटक जाते हैं। है प्रॉब्लम? तो यही प्रॉब्लम हमने यहां पे सॉल्व कर दी है। हमने क्या किया है, अब इस सिस्टम को, ये जो कैमरा है, कैमरा का एचडीएमआई आउटपुट यहां पे आ रहा है, देखो ये एचडीएमआई आउटपुट, और ये गया एचडीएमआई आउटपुट कैप्चर कार्ड के जरिए लैपटॉप को, यानी कैमरा की शूटिंग मिल रही है हमें। ओके, और यहां पे जो टेलीप्रॉम्प्टर की जो स्क्रीन है जो आपको यहां पे दिखने वाली है, ओके, आपका फाइनल आउटपुट जो है वो फाइनल आउटपुट आपको यहां पे दिखाई देने वाला है, वो कनेक्ट किया है इस एचडीएमआई से, दूसरी एचडीएमआई से, जहां पे हम प्रोजेक्टर लगाते हैं। यानी इस लैपटॉप को एचडीएमआई इन भी है और आउट भी है। एचडीएमआई इन को क्या किया, कनेक्ट किया हमने कैमरा, और आउट को क्या कनेक्ट किया, टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन, जो हम प्रोजेक्टर को लगाते हैं उसी जगह पे हमने क्या किया, ये जो टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन है उसको हमने आउटपुट दे दिया है। इतना डायग्राम समझ आ रहा है? बाकी पावर कॉर्ड लगाई हुई है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है, बस माउस लगा दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले ये देखेंगे हम, स्क्रिप्ट हमें पढ़नी है। किसकी स्क्रिप्ट रेडी है पेन ड्राइव में? आपको बोला गया था स्क्रिप्ट लेके आओ, है? दे दो पेन ड्राइव। हमें एक लैपटॉप लगेगा। हाँ, आवाज फाटते का सर? नहीं, आवाज फाटते खूप ना, ओव्हर होतोय आवाजाला, क्लिअरिटी नहीं है। आता बघा, हॅलो, चेक चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक, आता येतो व्यवस्थित? ओके, ठीक है। क्या फाइल?
वन टच एफ FDP. तर त्या दोन आहेत स्क्रिप्ट, ही वर्ड वाली आहे, ही PDF. अच्छा, आपल्याला वर्ड वालीच लागेल. ठीक आहे. आता PPT तुम्हाला तिकडे लावायची आहे. स्क्रिप्ट है. ओके, दोनों है ना. स्क्रिप्ट हमें एक्चुअली मैं सेटिंग बताता हूँ. सेटिंग करनी पड़ेगी आपको पहले. हाँ, आपको एक दूसरा लैपटॉप लगेगा जिसमें मैं लैपटॉप जस्ट कुछ करप्ट हो गया है, दूसरा कोई भी किसी भी लैपटॉप पे कर लो, क्योंकि हमें वो लैपटॉप वहां पे आपकी स्क्रिप्ट जो है ना हमें अलग अलग से कनेक्ट करनी है यहाँ पे बैठ के. अच्छा हाँ हाँ, PPT है ना, तो वो दूसरे लैपटॉप पे लगेगी. वो मैं यहाँ पे सेटिंग बताऊंगा. पहले स्क्रिप्ट आपको सेट कैसे करनी है वो बताऊंगा मैं. ओके, त्यांना कॅमेरा ट्रॅक पाहिजे. तिकडचं नको काय करतो, ते त्याला कॅमेरा लावलेला आहे दाखवलेला अलग अलग. कल हमने क्या देखा. हेलो, कल हमने क्या देखा. एक कैमरा है और कैमरा आपको शूट कर रहा है. कैमरा का इनपुट हमने किस में लिया, मिक्सिंग लैपटॉप के OBS में लिया. कैमरा आपको शूट कर रहा है, उसका रिकॉर्डिंग हमने कर लिया. अब जो कुछ भी आप बोले जा रहे हो वो वैसे के वैसे रिकॉर्ड करेगा और आपका वीडियो बना देगा, राइट. लेकिन आपको जो बोलना है, वो जो स्क्रिप्ट है, वो आपको पढ़ने के लिए कहां पे दिखनी चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखनी चाहिए. अब ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है, एक्चुअली इसकी स्क्रीन यहां पर है जिसका रिफ्लेक्शन आपके सामने हो जाता है. अब आपको क्या दो टाइप से यहां पे दो फॉर्मेट में आप कंटेंट बना सकते हो. आपको इस टेलीप्रॉम्प्टर पे एक तो आपकी स्क्रिप्ट दिखाई देगी, नहीं तो आपका फाइनल आउटपुट दिखाई देगा. आ रही समझ बात. एक तो स्क्रिप्ट, नहीं तो आपका फाइनल आउटपुट. यानी आप खुद हो और आपकी PPT का मिक्सिंग हो रहा है. दो चॉइसेस है. अगर आपको सिर्फ स्क्रिप्ट देख के बोलना है तो आपको एक लैपटॉप लगेगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इस स्क्रीन को. जो आप अपने लैपटॉप पे करोगे वो डायरेक्टली यहां पे दिखाई देगा. यानी क्या करना है, देखो ये है स्क्रिप्ट. अभी ये फॉन्ट आप पढ़ पा रहे हो, यहां पे पढ़ पा रहे हो, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं पढ़ सकते. वहां पे आपको फॉन्ट की साइज ज्यादा लगेगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देते हैं. ओके, स्क्रीन येत नाहीये, एकच मिनिट.
ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स है उनको अभी वर्ड की स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, Yes, very clear. ओके, ठीक है। तो ये है आपकी स्क्रिप्ट। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ गया था, आपको तो दिख रही थी लेकिन ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज आपको बढ़ानी है। कंट्रोल ए, कंट्रोल ओके। इसके बाद आपको वर्ड में एक और एक सेटिंग करनी है, वो जो रिबन आती है ना, रिबन ऊपर से, वो रिबन आपको बंद करनी है। कहां पर से बंद की जा सकती है? व्यू, हाँ ये देखो, यहां पे बटन है, क्लोज के नीचे बटन है। एक्चुअली वर्जन टू वर्जन में ऑप्शन बदलता है, किसमें वो टर्न ऑफ रिबन आता है, किसमें वो माइनस वाला बटन आता है, किसमें वो पिन वाला सिंबल आता है। तो देख लो आप, ये आपको क्या करना है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, यानी सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए यहाँ पे? आपकी स्क्रिप्ट दिखनी चाहिए बस। फॉन्ट साइज आपको बढ़ानी है बस। जितनी फॉन्ट साइज आप बढ़ाओगे उतना बेटर रहेगा। लाइन स्पेसिंग जो है, कंट्रोल ए, होम, लाइन स्पेसिंग सिंगल रखनी है आपको। एंड जो पैराग्राफ स्पेसिंग आती है ना, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर दो। ओके, क्या होगा इससे? नजदीक नजदीक आपकी जो लाइंस है वो नजदीक नजदीक आपको दिखाई देंगे। यस, एक पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव दे दो, ये आप ही के इसमें कॉपी करके दो। हाताने घ्यायचे ते असं, नाही दिसत। कंट्रोल एस, एक और एक लैपटॉप लगेगा जिसको हम अभी ये हार्ड डिस्क जोड़ेंगे। बाहर ही डाल दिया मैंने। ओके, हाँ लगा दो उसको। आप यहां पे बैठो। हाँ, हे दिसतंय एनडीआय। ती स्क्रिप्ट ओपन करते। या डेस्कटॉप पे कॉपी कर दो। पहा मला आता
थोडा वेळ वेळ लागतो. दोन किंवा तिसरा, जर स्क्रिप्ट साठी लावायचा असेल तुम्हाला तर तीसरा लैपटॉप लागेल. स्क्रिप्ट भी चाहिए आपको, पीपीटी भी चाहिए और स्क्रिप्ट भी चाहिए, तो आपको 3 लैपटॉप, यानी एक स्क्रिप्ट के लिए लैपटॉप लगेगा, दूसरा पीपीटी के लिए लैपटॉप लगेगा, और जो तीसरा जो लैपटॉप है वो मिक्सिंग, स्क्रिप्ट पीपीटी वहां पे और मिक्सिंग. समजा मी टेली ठीक है, ठीक है. ठीक आहे. बघा आधी आहे करू, हा पाहून घ्या हा सगळं. ठीक है. अब सबसे पहले सर आप पीपीटी है, ठीक है. हेलो 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 सर. अरे अच्छा अच्छा. माझं थोडंसं जम्बलिंग झालंय म्हणून विचारलं. आपका चलने दो, मैं शुरू कर देता हूं. थोड़ा आप भी कंफ्यूज हुए एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पे. हाँ, सिंपल. अभी तक हमने क्या देखा, टीचर का एक लैपटॉप है और मिक्सिंग का एक लैपटॉप है. टीचर के लैपटॉप पे क्या चल रहा है, पीपीटी का लैपटॉप क्या मिक्स कर रहा है, टीचर को और उसकी पीपीटी को मिक्स कर रहा है. लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन आपको गाइडेड चाहिए, वेलकम स्टूडेंट से लेके थैंक्स तक, ईच एंड एवरी वर्ड आपको स्क्रिप्टेड चाहिए. ऐसा ना हो कि कुछ फंबल हो जाए, ऐसा ना हो कुछ आप गलत ही बोल दो. तो इसके लिए क्या चाहिए फिर आपके पास, स्क्रिप्ट चाहिए. स्क्रिप्ट. अभी थोड़ा सा सिनेरियो देखो. आपने कभी न्यूज रूम का अगर वीडियो देखा होगा कि जहां पे न्यूज रूम चलते हैं, आपको पता है वो जो एंकर रहते हैं जो न्यूज देते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि अगले 1 मिनट के बाद उनको क्या बोलना है, क्या बोलना है. वो सारी टेक्स्ट उनके सामने स्क्रॉल होती रहती है, सारी टेक्स्ट, और उनको इंस्ट्रक्शन अंदर से आता है डायरेक्टर से कि हाँ जस्ट स्टार्ट, मैं क्लू दूंगा, आप स्टार्ट करना. 4 3 2 1
स्टार्ट, हेलो हेलो पार्टिसिपेंट्स, हेलो, ये स्टार्ट कर देते ना। एक्चुअली वो ईच एंड एवरी वर्ड उनके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर रहता है और टेलीप्रॉम्प्टर वो पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। अब बाजू में दूसरे बंदे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन करने वाला जो पर्सन होता है, जो एक्चुअली एंकर रहता है, जो आपको न्यूज पढ़ा के दे रहा है, एक्चुअली एक बाजू वाले लोग वो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है उस हिसाब से पीछे कंटेंट लगा देते हैं। रियलिटी में न्यूज रूम में आप जो देखते हैं ना, कितना बढ़िया फर्नीचर है, कितना लेविश वो सारा बैकग्राउंड है, रियलिटी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन होता है, और इसी को वीएफएक्स टेक्नोलॉजी बोली जाती है। आप पीछे ऐसा बैकग्राउंड लगा सकते हो, कौन सा भी, आप डेजर्ट लगा सकते हो, आप अंटार्कटिका लगा सकते हो, आप चांद लगा सकते हो। आपने जब चांद्रयान 3 का मिशन चल रहा था, आपने टीवी पे ऐसे देखा होगा कि वो रॉकेट के अंदर जाते हैं और दिखाते हैं ये यहाँ पे क्या है। एक्चुअली सारा ग्राफिक्स है, और वो ग्राफिक्स कैसे रिप्लेस होता है ये आज हम देखेंगे सर। अच्छा सर, 1-2 मिनिट उभे राहता तिथे। तो वो माइक लगा दो। हाँ सर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओबीएस स्टार्ट कर रहे हैं। ओबीएस स्टार्ट कर दिया। शुरू से लेंगे हम। सबसे पहले हमें एक न्यूज रूम का बैकग्राउंड चाहिए। ओके, हाँ, तो न्यूज रूम का बैकग्राउंड मैंने आपको डाउनलोड की लिंक दी है, वहां पे वर्चुअल सेट नाम का एक फोल्डर दिया मैंने आपको, उसमें बहुत सारे कंटेंट दिए मैंने आपको। हाँ, वो सारी इमेजेस दिए आपको, वीडियोस दिए, वो 3D जो न्यूज रूम में चलने वाला जो बैकग्राउंड रहता है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको दिए। तो आप उसको डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप में ले लो, और आप ट्राई करके देखो कि आप कहां कहां पे खुद को रख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, प्लस इमेज, इसको मैं बोल रहा हूं बैकग्राउंड। ओके, ब्राउज। अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लैपटॉप में वो बैकग्राउंड्स कहां पे स्टोर्ड है। आपको एक जिप फाइल डाउनलोड होगी आपके पास, और जिप फाइल जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इतने सारे फोल्डर्स उसमें से निकलेंगे। इसमें यहां पे एनिमेटेड जेएफ है, 2D बैकग्राउंड्स है। ठीक है, सर को ऑफिस लेके जाते हैं हम। यस, अब क्या हो गया, ये हमारा कैनवस तो बड़ा है, हाँ, लेकिन उसमें जो इमेज आ रही है वो इमेज छोटी आ रही है। हमें अगर उसे फिट टू फिट बिठाना है तो एक सिंपल शॉर्टकट है, कंट्रोल एफ। पूरी विंडो से वो सेट हो गया, नहीं तो आपको खींचना पड़ेगा। नहीं तो क्या करोगे आप, यहां पे इसको सेट करना है तो क्या करोगे आप, यहां पे रखा है मैंने, इसको लगा दिया, यहां पे स्ट्रेच करके बढ़ा दिया। एक्चुअली कैनवास का रेजोल्यूशन ज्यादा है और जो मैंने इमेज डाउनलोड की उसका रेजोल्यूशन कम है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। नहीं तो अगर वो उसी सेम रेजोल्यूशन का होता तो वो फिट हो जाता, नहीं तो बड़ा भी हो जाता है, उसको छोटा करना पड़ता है। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। बहुत सारे बैकग्राउंड्स है। अगर फिर से चेंज कर रहा है, राइट क्लिक करो उस पर, प्रॉपर्टीज में जाओ, ब्राउज करो, ये सारे बैकग्राउंड्स है। थोड़ा न्यूज रूम वाला लगाते फील। ये थोड़ा बड़ा है, इसको भी हम कंट्रोल एफ करके सेट कर देते। ओके, अब यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस करने के बाद मुझे अब कैमरा लेना है। कहां से लूंगा मैं, नहीं, लैपटॉप एनडीआई से लिया जाता है,
कैमरा जो है वो वीडियो कैप्चर से लिया जाता है, वीडियो कैप्चर डिवाइस, इसको नाम दे देता हूं मैं कैमरा। ओके, यहां पे यूएसबी वीडियो एंड ओके, आ गए, कैमरा तो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको अगर हम हटा देते हैं तो पीछे क्या दिखाई देगा? हाँ, ये अगर हम हटा देते तो पीछे क्या है एक्चुअली? हाँ, पीछे न्यूज रूम का जो कुछ भी बैकग्राउंड आप पीछे डालोगे, आपके कॉलेज का पूरा लविश जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप पीछे रख सकते हो, या लाइब्रेरी का, सर आपको कुछ हो रहा था, लाइब्रेरी का फोटो आप पीछे डाल सकते हो कि हाँ लाइब्रेरी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं। यस, तो यहां पे क्या करना है आपको? जस्ट कैमरा पर राइट क्लिक करना है एंड हम इसको अप्लाई करेंगे फिल्टर, फिल्टर प्लस क्रोमा की एंड ओके। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक्चुअली ये स्टूडियो नहीं है, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आप समझ लो। स्टूडियो में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से लाइट डाला जाता है, कैमरा प्रॉपर तरीके से सेट होता है, थोड़ा सा थोड़ा उतनी क्वालिटी में आउटपुट नहीं आएगा जितना क्वालिटी में मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा वर्क देना पड़ता है और ईच एंड एवरी चीज यानी वो लाइट प्रॉपर तरीके से डालने पड़ते हैं, फेस को प्रॉपर तरीके से ब्राइट अप करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा वर्क लगता है। अभी जैसा है वैसा आप एक्सेप्ट कर लो प्लीज। ओके, तो यहां पे मैंने ग्रीन स्क्रीन जो है तो ग्रीन स्क्रीन यहां पे रिमूव कर दिया है, थोड़ा इनको ब्राइट अप किया जा सकता है ओबीएस में। कैसे? फिर से मैं कैमरा को राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर में जाऊंगा और ये जो क्रोमा की है ना, तो क्रोमा की में क्रोमा की के ऑप्शन में ही एक ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूं। एक्चुअली यहां पे लैपटॉप में बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे, लेकिन प्रोजेक्टर पे उतने डिटेल्स नहीं आ रहे, तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे देखकर आपको ट्यून करना है कि कितना परफेक्ट आपकी स्किन टोन कितना परफेक्ट आ रहा है, वो लाइट जो है लाइट कितना परफेक्ट आ रहा है। ओके, अब यहां पे दो चीजें हमने ले ली है, क्या? कैमरा लिया है, बैकग्राउंड लिया है, और क्या लेना पड़ेगा हमें? हाँ, माइक लेना पड़ेगा। माइक कहां से लेंगे हम? माइक प्लस ऑडियो इनपुट कैप्चर, माइक ओके, एक्सटर्नल माइक्रोफोन, ये जो कनेक्ट हुआ है ना एक्सटर्नल माइक्रोफोन है। ओके, माइक में बोलिए सर। यस, थोड़ा ऑडियो की लेवल जो है ना, तो हमें कितनी चाहिए ऑडियो की लेवल? अप टू द रेड मार्किंग, रेड मार्किंग जहां पर आ रही है ना, तो वहां पर हमें उसका लेवल आना चाहिए। तो यहां पर हम दो फिल्टर लगाएंगे इसको, एक नॉइज रिडक्शन और दूसरा गेन बढ़ाएंगे इसको, गेन। सर पानी का पानी पावा है पानी दे। 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, 3 डॉट्स, फिल्टर, ये नीचे वाला जो प्लस वाला बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे, प्लस। कौन कौन से फिल्टर लगाने हैं? एक नॉइज सेपरेशन, ओके, और दूसरा आपको फिल्टर लगाना है गेन का। गेन आपको थोड़ा बढ़ा के देना है, अराउंड 7, 8 कुछ, वो ट्राई आउट करना पड़ेगा आपको। एंड नॉइज सेपरेशन भी काम करेगा। सर आप कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। ये फैक्ट समझ लो, जब हम कुछ भी नहीं बोल रहे तो वो जो मीटर है ना, वो मीटर 0 ही रहना चाहिए। वो अगर फड़फड़ाता है तो इसका मतलब क्या है? नॉइज है।
नॉइज है, वो फड़फड़ा रहा है, इसका मतलब है नॉइज है, एनवायरमेंटल नॉइज उसमें आ रहा है। ओके, जब आप बोलोगे तो उसने उछलना चाहिए, जब आप नहीं बोल रहे तो उसने चुप ही बैठना चाहिए। ओके सर, बोलिए कुछ। Welcome to Department of Sociology. To understanding society in better way. Good morning, students. I'm delegates to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Head Department of Sociology, Poona College. एक मिनट सर, हाँ थोड़ा आपको डिले दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोसेस होकर वीडियो दिख रहा है आपको, रियल टाइम नहीं दिख रहा है। ऑडियो इनका पहला आएगा, वीडियो आपको थोड़ा बाद में दिखाई देगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है आपको। होता क्या है, माइक की जो आवाज है ना वो कंप्यूटर तक पहले पहुंच जाती है, लेकिन कैमरा का जो वीडियो है ना वो प्रोसेस होके बाद में पहुंचता है, तो हमें थोड़ा टाइमिंग का मैचिंग करना पड़ता है। इसे सिंक मैच कहना बोलते हैं। 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज, और ये जो माइक है ना इसको जस्ट कुछ मिली सेकंड का हमें 170 मिली सेकंड। हम कैमरा को तो फास्ट नहीं कर सकते, कैमरा ऑलरेडी लेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइक को बोल सकते हैं अरे बाबा तू रुक, तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो इस ये 160 मिली सेकंड का हमने क्या दी, एक्चुअली मुझे पता है इस कैमरा का 160 का डिले है एक्चुअली, इस वजह से मैं माइक को 160 का दे रहा हूं। अलग अलग माइक का थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अराउंड 150 to 200 इस बीच में आपको वो फिगर देनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा कुछ तो भी गड़बड़ लगता है, यानी लिप्स अलग हिलती है और आवाज कुछ अलग आती है। तो ये मैच होने के लिए आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है। ओके, अब नेक्स्ट वाली सेटिंग, हमें वीडियो जो चाहिए ना वो MP4 फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो एक सेटिंग आप समझ लो, मैं सेटिंग में जा रहा हूं, सेटिंग, और जो आउटपुट है, आउटपुट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, MP4। और ये ऊपर जो है, ऊपर इसका लोकेशन है जो मैंने दिया है D ड्राइव कोर्स रिकॉर्डिंग, ये इसका लोकेशन है और फॉर्मेट है MP4। बस मैं इसे ओके करता हूं। अब क्या करना है सर, एक बार वो स्क्रिप्ट जो है ना वो पढ़ लो आप, एक कितने, एक 5-6 लाइंस, सिर्फ एक 5-6 लाइंस उनको दिखा दो। मला नाही टाकता यायचा, शक्तीला सांगावं लागेल। त्याच्यावर कापड टाक. तिकडून डावं लागेल तसं। अब दिख रहा है क्लियर सर? फिनिशिंग करायला चेहरा वगैरे असतो. नहीं, स्पेशल इफेक्ट काही नहीं है त्याच्यामध्ये। वो जो कुछ भी करना है आपको कैमरा से पहले ही कर लेने हैं। एक्चुअली हमारा जब बाल भारती में शूट चल रहा था ना, तो मेकअप वाले पर्सन भी थे वहां पे, मेकअप करके ही भेजते थे अंदर लोगों को। वो करना ही पड़ता है एक्चुअली, कैमरा के सामने जाना है तो मेकअप करना ही पड़ता है। और भी कुछ चीजें हैं पर्सनल बारे में, बाद में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सर मैं स्टार्ट करूंगा, आप शुरू कर दो, ठीक है। और आपको क्या करना है, वो जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पे बीच में वो लाइन्स आनी चाहिए, इस हिसाब से आपको स्क्रॉल करते जाना है। स्टार्ट। Welcome to Department of Sociology. To understanding society in better way. Good morning, students. I am delighted to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr.
Gulab Pathan, Head Department of Sociology, Poona College, Camp Pune. And I will be your guide. Throughout this subject course, sociology is not just a subject, it is a lens through which we will view the complexities of human society, interaction and behaviors. Introduction. पढ़ने में फॉन्ट साइज थोड़ी, हाँ इससे पहले आपने पढ़ा नहीं है इस वजह से, ठीक है। ओके सर आ जाओ आप। लगा तुम्हें? नहीं, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसी बैकग्राउंड पे आपको किती रेकॉर्डिंग कसं आलंय आवाज पाहू दोन्ही दाखवतो ना मी, वेळ होतो हाँ पण त्यांनी काय फारसे फरक नाही पडत, नहीं। आपको जो कुछ भी देखना है टेलीप्रॉम्प्टर में ही देखना है और वहीं पे आपसे आपको पढ़ते जाना है। और सिर्फ त्याला कॅमेरात नाही दिसत आहे, थोडे इकडे मध्ये या सर, मध्ये अजून मध्ये, एक मिनिट बस, हा बस बस बस, थोडं सरांना मोठं करू ना आपण, हाँ बस बस बस, हाँ एक मिनट, इनके लिए बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम। हाँ हेलो, ओके बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने, करो स्टार्ट सर, Yes, sir. स्टार्ट। Welcome to Department of Sociology. We understand society in a better way. Good morning, students. I'm delighted to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Pathan, Department of Sociology, Poona College, Camp Pune, and I'll be your guide throughout this subject course. Sociology is not just a subject; it is a lens through which we will view the complexities of human societies, interactions and behaviors. Introduction in that. Before we start into what sociology entitles, let me ask you a few questions. What makes you who you are? How do societies from evolve and change over time? Have you ever wondered why people from different backgrounds, cultures, beliefs interact the way they do? These are the questions we will explore together in this course. ओके स्टॉप। ये वीडियो हुआ है वो देख लेते हैं पहले। फाइल, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और शो रिकॉर्डिंग करना है। Welcome to Department of Sociology. To understanding society in better way. Good morning, students. I am delighted to stand with you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Pathan, Head Department of Sociology, Poona College, Camp Pune, and I will be your guide. Throughout this subject course, sociology is not just a subject, it is a lens through which we will view the complexities
Welcome to Department of Sociology. We understand society in a better way. Good morning, students. I'm delighted to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Pathan, Head Department of Sociology, Poona College, Camp Pune, and I will be your guide throughout this subject course. Sociology is not just a subject, it is a lens through which we will view the complexities of human societies, interactions, and behaviors. Introduction in that, before we start into what sociology entitles, let me ask you a few questions. What makes you who you are? How do societies from evolve and change over time? Have you ever wondered why people from different backgrounds, cultures, beliefs interact the way they do? These are the questions we will explore together in this course. हेलो, Thank you, sir. क्या क्या किया हमने? हेलो, कैमरा का इनपुट लिया, हाँ, उसके पीछे हमने क्या डाला? एक बैकग्राउंड डाल दिया, ओके, और जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट उनको उनके जो टेलीप्रॉम्प्टर है उस पर उनको स्क्रिप्ट उनकी दिखाई दे रही थी, वो पढ़े जा रहे थे। अब सर आपका नाम? अशोक मर्डी सर। अशोक सर ने भी वो पढ़ा, ओके। अगर थोड़ा सा वो रिसाइट कर लेते अशोक सर, पहले से वो पूरा पढ़ लेते, क्या पॉइंट है, किस तरीके से बोलना है, तो उनका भी प्रेजेंटेशन हमें ऐसा लगता है कि उनका वही सब्जेक्ट है। एक्चुअली बेसिकली उनका वो सब्जेक्ट नहीं था उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट है उनका। तो सी, ये पावर है टेलीप्रॉम्प्टर का। टेलीप्रॉम्प्टर अगर है, मैं कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूं क्या बोलना है मुझे, तो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने जाकर आप 100% बोल सकते हो। अब सर नेक्स्ट, आपकी पीपीटी आपने लगा दी वहां पे? नहीं लगा। ओके, थोड़ी वो सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। दूसरा, सुद्धा खालून अशी वर जाताना ऑटोमॅटिक दिसायला त्याला काय करावं लागेल? वर्ड में, हेलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर का क्वेश्चन है, एक मिनट, जगम सर का क्वेश्चन है कि स्क्रिप्ट ऑटोमेटेड स्क्रॉल होनी चाहिए। हाँ, ये ऑटोमेटेड स्क्रॉलिंग का बेनिफिट या उसकी जो पावर है आप उसी वक्त ले सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वर्ड में ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग कैसे करते हैं आप देख लो एक बार। मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू कर रहा हूं, ओके। वर्ड तो इस्तेमाल कर रहे हो ना, करते हो ना। आपको क्या करना है, ये जो माउस का जो ये स्क्रॉल का जो व्हील है वो एक बार आपको प्रेस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो व्हील प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा माउस को पीछे खींचना है, स्पीड नहीं जाएगी। अब वही तो है ना, वो कितना, ओके ओके, डिपेंड आप कितना भी फास्ट। अभी ये सेटिंग नहीं रही थी, आपको मैन्युअली वो सेट करना पड़ता है कि मुझे कितना फास्ट चाहिए। अभी देखो मैं थोड़ा स्टॉप कर दूंगा, एक मिनट देख लो आप, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना ये बटन है, बटन यहां पे प्रेस कर रहा हूं। अब ये ऑटो स्क्रॉल के मोड में आ गया। आप जितने फास्ट इसे पीछे खींचोगे ना उतना फास्ट वो चलेगा, और जितना फास्ट ऊपर लेके जाओगे उतना फास्ट जाएगा, लेकिन आपको स्लो मोशन में चाहिए। जितना स्लो चाहिए उतना माउस को ना थोड़ा सा पीछे खींचो, जितना फास्ट चाहिए। लेकिन ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उसका स्पीड और आपका स्पोकन स्पीड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ओके, तो दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार लगा दिया, आपके पास एक लैपटॉप है, स्क्रिप्ट वाला लैपटॉप, आपने वो क्लिक कर दिया, वो चल रहा है, आपने स्पीड सेट कर दी। ओके, हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर नहीं होता तो किसी को बता, बोल दो, वो टक टक करते जाएगा, वो स्क्रिप्ट ऊपर 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 जाएगी। वर्ड मतलब से ओके सर, पीपीटी सर आपलं नाव पण खाली आलं पाहिजे. ओबीएस मध्ये वो बॉडी स्टेडी रहना चाहिए क्या? सब में होता है, 2007 से आगे सब में होता है वो। लेकिन इसके लिए माउस माउस चाहिए, एक्चुअली माउस का ये स्क्रॉल का बटन चाहिए। फक्त दाबायचं. पीपीटी बन रही है ना, ये फाइनल बनाते हैं इनको, थोड़ा सा वो उससे स्विच हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट कहाँ पे? स्क्रिप्ट से इसी में है। तो स्क्रिप्ट यहां पे लगा दो, स्क्रिप्ट यहां पे कॉपी कर दो। स्क्रॉलिंग किसी को बोल दो सर स्क्रोलिंग के। नहीं, वो लैपटॉप से नहीं होता, वो नहीं होता। वो एक माउस लगेगा, क्योंकि वो जो स्क्रॉल का जो कमांड है ना, वो उसी पे कमांड है वो। जेव्हा आपण स्विच करणार, आपल्याला दाखवायचं पीपीटी दाखवायचं, आपल्याला दाखवायचं पीपीटी, हा. आपल्याला दाखवायचं त्यावेळी एक छोटीशी पट्टी आपल्या नावाची येऊन गेली पाहिजे. मग त्याला ओबीएस मध्ये काय आहे स्क्रोल नको, स्क्रोल आपल्याला माहिती आहे. नहीं, पहले उनकी स्क्रिप्ट ऑन करो। पहले उनकी जो स्क्रिप्ट है ना सोशियोलॉजी की, शायद वो, हाँ एक मिनट, थोड़ा इनका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। आपको इससे नीचे लेना पड़ेगा। उसका भी फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा आपको। इनकी स्क्रिप्ट कर लेते पहले। ठीक है सर, आपने ठीक है, 2 मिनट आप पहले समझ लो। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पीछे बैकग्राउंड रहेगा। ओके, कुछ भी लैंग्वेज बैकग्राउंड आप डाल दो, सबसे पीछे बैकग्राउंड रहेगा। उसके आगे सर की पीपीटी रहेगी, उसके आगे सर रहेंगे, और उसके आगे कुछ नई चीजें हम ऐड करेंगे, जैसे टाइटल है, कुछ पोडियम है, वो सारी चीजें हम ऐड करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। पूरा डिलीट कर देता हूं मैं, बैकग्राउंड डिलीट, कैमरा डिलीट, माइक डिलीट, एनडीआई सोर्स डिलीट। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इमेज, इसको नाम देता हूं मैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तब तक आप सेट कर लो। हाँ, बैकग्राउंड, ब्राउज, अच्छा बैकग्राउंड, ये ओपन, ओके।
बैकग्राउंड आ गया। अब इसके आगे क्या चाहिए हमें? पीपीटी, उनकी पीपीटी। पीपीटी का कौन से इनपुट से आएगी पीपीटी? जैसे बैकग्राउंड हमने इमेज से लिया, लैपटॉप का कहां से आएगा? एनडीआई से आएगा। एनडीआई प्लस एनडीआई, ओके। अब उसका नाम रीनेम, एक मिनट डिलीट कर देता हूं मैं इसे, डिलीट। फिर से देखो, प्लस एनडीआई, इसको नाम दे देता हूं मैं लैपटॉप। यहां पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली 2-3 सोर्सेस है यहां पे, इसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला, वो जो लैपटॉप है वो सिलेक्ट करूंगा, ओके। ये आ गई पीपीटी। पीपीटी को आप कहां पे रखना पड़ेगा? टीवी के ऊपर। हाँ, वो टीवी में सेट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड भी ऐसे है कि जिसमें टीवी है, तो उस टीवी में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पीपीटी है ना, उसको इस टीवी में सेट करना पड़ेगा। अब इनकी जो पीपीटी है ना, वो 4:3 है। अगर ये 16:9 होती ना, तो पूरी की पूरी फिट हो जाती। वाइड फॉर्मेट में अगर इनकी पीपीटी होती तो पूरी की पूरी फिट हो जाती। फिर आप कैमरा के सामने आओ। इसके बाद हम क्या करेंगे? वीडियो कैप्चर डिवाइस, कैमरा, ओके, यूएसबी वीडियो, ओके। कैमरा तो आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? क्रोमा की, यस, राइट क्लिक, फिल्टर, फिल्टर में नीचे वाला फिल्टर, क्रोमा की, ओके। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड क्लोज। आगे सर यहां पर, ठीक है। इन अतः अब सर आप क्या करो, एक जगह फिक्स कर लो आप खुद की। ये बस बस बस, एक्चुअली नहीं नहीं, एक जगह इनकी फिक्स कर ली हमने। अब यहां पे हमारे हाथ में है, ऑपरेटर के हाथ में, इनको कहां पे सेट करना है। सी, अगर इनको छोटा करना है तो इसे छोटा भी कर सकता हूं, यहां पे भी रखा जा सकता है इनको, ओके। बड़ा करना है तो बड़ा भी किया जा सकता है, और यहां पे भी रखा जा सकता है। यानी इस साइड में रखना है, इस साइड। ये बात अच्छी तरह से समझ लो आप। क्रोमा रिमूव होने के बाद उस व्यक्ति को आप कहीं पे भी प्लेस करके रख सकते हो कि कहां पे आपको रखना है, ओके। तो जस्ट हम यहां पे पहले इनको रख देते हैं। अब इनके सामने पोडियम तो चाहिए ना, प्लस इमेज, पोडियम, ओके, ब्राउज, पोडियम है, मैंने आपको दिए सारी इमेजेस। पोडियम कौन सा दूं? एक 10,000 वाला, एक 20,000 वाला, कौन सा लगाओ? ये वाला लगा देते हैं, ओके। इसको बड़ा करना पड़ेगा एक्चुअली, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है। और ऊपर के जो माइक्स है, एक्चुअली उनके पास भी माइक है ना, तो ये माइक हम हटा देते हैं, अल्टर दबा के इसको क्रॉप कर देते इस माइक को। और सर का जो है, हाँ यहां पे सेट कर देते, ओके। अब पूना कॉलेज का लोगो रहेगा, हाँ वो भी लगाना होगा हमें। गूगल पूना कॉलेज लोगो कौन सा है? ये नहीं, ये तो नैक का है, ये वाला सेकंड वाला।
सेव इमेज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम इसे, सेव, और ए प्लस का भी लगा देते हैं ना, ए प्लस, सेव इमेज, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ओके, अब ये दोनों इमेज हमें कहां पे चाहिए? अब इमेज एक हाँ, पोडियम को साइड बाय साइड लगा देंगे हम। इमेज यहां पे लोगो, ओके, ब्राउज, डेस्कटॉप, ये ओपन, ओके। अब इसको छोटा करके पोडियम पे लगा देते हैं, और ए प्लस का इमेज, लोगो 2, ओके, ये नेक का, ओके, ठीक है। सर का नाम भी डाल देते फिर, हाँ, प्लस टेक्स्ट, टाइटल, ओके। सर आपका नाम, असम का डॉक्टर क्या डेजिग्नेशन? HOD, डिपार्टमेंट, HOD सोशियोलॉजी। टाइटल बहुत बड़ा हो गया, वो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अब सर आपको एक चीज गौर करनी है, आपको तो स्क्रिप्ट सामने दिखाई दे रही है, राइट? अब स्क्रिप्ट के हिसाब से आपकी पीपीटी जो है नीचे देखना है और उसको नेक्स्ट कर देना है, हाँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से। आपको सिर्फ अपनी लैपटॉप और टेलीप्रॉम्प्टर, ये दो चीजें देखकर ही आपको आपका पूरा प्रेजेंटेशन करना है, ओके? हाँ, रिमोट है, वो देख लो आप। नेक्स्ट के लिए कौन सा बटन है, बैक के लिए कौन सा बटन है? ठीक है, करो शुरू। आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया एक्चुअली? हाँ, एक वन बाय वन हमने सारे ऐड कर लिए, उनको सेट कर लिए। पीपीटी जिसको आता है ना, पीपीटी में इमेजेस जो सेट कर पाते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत आसान है। जैसे आपने वो कैनवास में ऐड कर लिया और उसको सेट कर लिया, ओके, ठीक है। मैं यहां पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूं, स्टार्ट। वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। क्या प्रॉब्लम है यहां पर? माइक लिया ही नहीं हमने, हाँ, प्लस ऑडियो इनपुट कैप्चर, माइक, ओके, एक्सटर्नल माइक्रोफोन, ओके, ये माइक आ गया हमारा, फिल्टर, नॉइज सप्रेशन एंड गेन। थोड़ा दो चार शब्द बोलो सर। ठीक है, करो शुरू, करो शुरू सर, स्टार्ट। Welcome to Department of Sociology. We understanding society in a better way. Good morning, students. I'm delighted to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Pathan,
Head Department of Sociology, Poona College Camp Pune, and I will be your guide throughout this course. Sociology is not just a subject, it is a lens through which we will view the complexities of human society, interactions, and behaviors. Introduction. In introduction, before we start into what sociology entitles, let me ask you a few questions. What makes you who you are? How do societies evolve and change over time? Have you ever wondered why people from different backgrounds, cultures, and beliefs interact the way they do? These are the questions we will explore throughout in this course. The sociological imagination. Sociology helps us develop what C. Wright Mills called the sociological imagination. It is the ability to connect personal experience to broader social structures and historical context. This perspective enables us to see our individual lives are not isolated. They are influenced by the society's norms, values, and institutions. Why sociology? Why study sociology? Now, you might be wondering, why should I study sociology? Let me share with you some compelling reasons. Number one, understand sociology or understand human behavior. Sociology helps us make sense of human behavior in a various social settings. It offers insights into why people act the way they do in groups, organizations, and societies. Number two, cultural awareness. By studying sociology, we develop cultural awareness and appreciation for diverse lifestyles, customs, and traditions around the world. Critical thinking skills. Sociology. Next, essential sociological concepts such as social structure, socialization, social institutions, social stratifications, and globalization, and gender and race. At the same time, we must understand the real world relevance. Sociology is not just confined to textbooks and academic discussions. It has real world relevance, impacting how we view current events and social issues. By studying sociology, you will develop a richer understanding of the world and your role in it. Goals behind the learning sociology. Number one, collective a sociological imagination and view the world with a fresh perspective. To encourage critical thinking and analytical skills to interpret social phenomena. After that, to foster open dialogue and respectful discussion on diverse sociological topics. To inspire you to become agents of positive social change in your communities. We must talk about these all things very clearly.
let the journey begin. As we commence this journey, I invite you to be curious, open-minded, and engage yourself in detail. This course will be a dialogue between us, and your active participation is vital to enrich our learning experience. In conclusion, we must talk about sociology is a key to unlocking the system of human society. Together, we will explore the multi-faced dynamics that shape your lives, from the intimate to the global level. So let's embrace this adventure of understanding and creating lives through this lens of sociology. Thank you for joining to Sociology. I look forward to exploring the vast landscape of human society with each of you. Wish you best of luck and thank you very much. File, show recording. MB का वीडियो बन चुका है हमारा. नहीं अभी हाँ, आपकी स्क्रिप्ट रेडी है ना, तो आपकी पीपीटी वहां पे लगा दो. एक्चुअली ध्यान में तो उसका रीजन है, मेरे को खांसी है. अगर मैं स्लो हो गया कि खांसी है. Welcome to Department of Sociology. We understanding society in a better way. Good morning, students. Good morning, students. I'm delighted to stand before you today as we are start journey into the world of sociology. My name is Dr. Gulab Pathan, Head Department of Sociology, Poona College Camp, Pune, and I will be your guide throughout this course. Sociology is not just a subject. It is a lens through which we will view the complexities of human society, interactions and behaviors. Introduction. In introduction, before we start in sociology matters, let me ask you a few questions. What makes you who you are? How do societies from evolve and change over a time? Why people from a different backgrounds and beliefs interact the way these are the questions we will explore. Sociological imagination. Develop what C. Wright called the sociological imagination. The ability, personal experience to broader social structures and this perspective enables us to see their individual lives are not isolated, are influenced by the society's norms, values and institutions. Why sociology? Why study sociology? Now, एक 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं. चाय आ चुकी है. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंटिन्यू. हम ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का. हाँ नहीं कैसे करें, रहो दे रहो.
का रेकॉर्डिंग थांबून परत अटॅच कर.
चलो शुरू करते हैं। हेलो, Bigger PPT. आपकी पीपीटी, यही पीपीटी है राइट? Size. 16 और बड़ी कर सकते हैं। बड़ी कर सकते हैं ना, ठीक है, यहां से करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको बैकग्राउंड, एक मिनट, हम बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड। We saw his. Now we'll make changes in yours now. Let's see. सी, फॉन्ट उनका छोटा था। हाँ, अगर वो पीपीटी पे फॉन्ट अगर वो बड़ा रखते ना तो यहाँ पे भी बड़ा दिखता। टाइटल ही ज्यादा है। ऐसा मतलब लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर इसमें देखना पड़ेगा ना, पीपीटी पे देखना पड़ेगा ना सर, वो फिर आइकॉन। अगर स्क्रिप्ट नहीं है हाँ, तो अभी तो कनेक्शन नहीं किया मैंने, आपको डायरेक्ट आउटपुट, ये जो आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको डायरेक्ट टेलीप्रॉम्प्टर भी दिख रहा है, देखेंगे ना, यानी कि जो इसका है लैपटॉप का। उसके लिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम कनेक्शन करने के लिए। क्योंकि बनाए ने वो भी ट्रायल करके देखते हैं। देख सकते हैं। हाँ हाँ, साउंड ओके, दे तो पहले बोल दिए तो कैसा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, एक सेटिंग रहती है यहाँ पे। सिस्टम ऑडियो, फिर आप जो भी वीडियो प्ले करोगे ना उसका ऑडियो भी उधर आ जाएगा। हाँ, सायलेंट, तिकडे हे चालू आहे, माईक चालू आहे तिकडे। ते मीटचा स्माइलिंग फेस। इतना भी नहीं हंसना है। चलो, ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट्स, ऑनलाइन की तरफ आवाज जा रही है और हम और एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं जिसमें सेम सेटअप रखा है हमने, सिर्फ नाम चेंज किया है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूं मैं, स्टार्ट। Ladies and gentlemen, a very good afternoon to one and all. It is my pleasure to share a very exciting news. The names of the Nobel Prize winners in chemistry for the year 2023 were announced yesterday. There was a slight controversy as the names were already in circulation in the media few hours prior to the actual official announcement by the Nobel Committee. Let's begin. The Nobel Prize in Chemistry for the year 2023 is to be shared by three people: Moingi, Bawengi, Louis Brew, and Alexei Akimov for the discovery and synthesis of polymers. A brief introduction of the characters first. Dr. Bawendi is an American of Tunisian origin. He was born in Paris in 1961. He moved to US when he was a child. He received his bachelor's in arts from Howard University in 1982, and he obtained his PhD in chemistry in 1988, and he joined Massachusetts Institute of Technology in 1990 and became a professor in 1996. Louis Brew was born in 1943 in Ohio. He entered Rice University in 1961 on a Navy scholarship, which required him to work as a shipman at sea. Upon obtaining his PhD in 1969, he returned to Navy as a lieutenant. In 1973, he left Navy and joined Bell Laboratories, where his work
In 1967, he graduated from the Faculty of Physics, Leningrad University, and since 1999, he has been living in US as a scientist in a company called Nanocrystalline Technology. So a brief discussion about what Nobel Prize is. Nobel Prizes are awarded to those people who conferred the greatest benefit to humankind. Alfred Nobel was a Swedish chemist, mostly famous for invention of dynamite. When he died in 1896, he left his wealth to be used to establish 5 Nobel Prizes. Nobel Prizes are awarded in the field of physics, chemistry, medicine, literature, and peace. The first Nobel Prize was awarded in 1901. Since 1968, a Nobel Prize in economics also started. Each year, the Nobel Prize distribution ceremony takes place in Sweden, Stockholm, on 10th of December, the death anniversary of Alfred Nobel. Each recipient gets a medal, which is plated with 24 karat gold, a diploma, and a money of 11 million Swiss kroner, which roughly comes to about 7 crore Indian rupees according to today's exchange rates. So let's talk about what are quantum dots. Quantum dots are semiconductor particles a few nanometers of the dimension of few nanometers. Just to give you an idea of what a nanometer is, if you take a human hair and if you split it to about 1 lakh small particles, parts, and each part if you divide it by further 1000 parts, that is the size of a nanoparticle. What it means is, because of their sizes, quantum mechanical effects are more prominent in quantum dots, which means the rules that is applicable in our everyday life does not apply to quantum dots. For example, if you take gold, in our lives, gold has the same color. Those days, when a TV used to be neighbor's envy and owner's pride, those big, bulky TV. And today, our TV looks something like this. Yes, quantum dots are used to make the present day TV, as the images are found to be crispier, more vibrant colors, and it consumes much less energy, which makes it more environmental friendly. LED based quantum dots are being used in all kinds of displays like TV, computers, laptops, mobile phones, smartwatches, etc. The next application of quantum dot is in bioimaging. High luminescence, narrow emission, and low toxicity and biocompatibility of quantum dots make them a perfect display of bioimaging and diagnostics. For example, phosphorus quantum dots are being used as fluorescent labels for cancer bioimaging. Because of their small sizes, quantum dots are being used for targeted drug delivery, thereby increasing the efficacy of the drugs and reducing the cost.
Because of their ability to absorb light at different wavelengths and also a high probability of absorption, quantum dots make very attractive for light harvesting technologies such as solar cells. It is hoped that quantum dots will make solar cells more efficient and cost effective. With increasing demand of energy and depleting stock of fossil fuels, the world is searching for new energy sources. One of the most promising energy source is water splitting, because we have lots of water and the end product is non-polluting. Quantum dots are being used as photocatalysts which can drive this equation. Historically, glass makers knew that if you add some dopants in a glass, just like gold, silver, it can change colors. This has been known for centuries now. In 1979, Alexei Akimov began working on doped glass. He wanted to understand the chemical composition and structure of colloidal particles. In 1980s, upon observing the color of copper chloride, it was the first time and he became the first person to see a quantum dot. And thus he is considered to be the discoverer of quantum dots. In the next few years, Bruce extended the work for the synthesis of microscopic particles in suspended liquids. In 1993, Bawendi went to Bell Labs for a summer training where he met Bruce, who became his mentor. He revolutionized the production of quantum dots and improved their quality. Bawendi, he remembers his first year chemistry exam in Harvard when he got 20 out of 80. It was the lowest grade in the class. And he thought, oh, this is the end of me. What am I going to do from here? I guess he didn't do too bad, because about 30 years later, he is a Nobel laureate today. This year's chemistry Nobel Prize winners include a person who has a BA degree, Bachelor's of Art, one who failed in chemistry first year, another who studied physics his whole life, and yet another who worked in Navy and decided at some point to get back to academics. Probably there is a lesson for all of us in this story. Thank you very much for your time. Thank you. Hello. File show recording. Ladies and gentlemen, a very good afternoon. Louis and Alexei Akimov for the discovery and synthesis of quantum dots. A brief introduction of the characters first. Dr. Bawendi is an American of Tunisian origin. He was born in Paris in 1961. He moved to US when he was a child. He received his Bachelor's in Arts from Harvard University in 1982, and he obtained his PhD in chemistry in 1988. And he thereby increasing the efficacy of the drug and त्यांचं क्रोमा निघतं का? हा. ये कितना है माउस इसका? माउस थोडा कॅमेरा खाली घ्यावा लागेल. कॅमेरा हे टेलिप्रॉम्प्टर त्यांना बोलून घे ना. USB ड्राइव जरा एक मिनट इकडे या. इथं ये मेरी वाली ना, इसके अंदर जैसा डी मेरा ड्राइव है ना, USB ड्राइव, डी के सी पता नहीं कौन सा है.
तो मेरी उसके अंदर है पीपीटी। हाँ ये शायद इसमें ये यूएसबी ड्राइव दी इसमें है क्या? थोड़ा हाँ इसमें रहेगा, इसमें नीचे देखो जरा पीपीटी 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 और नीचे करायचा सोडू खाली PPT का हाँ थोड़ा एसएम का देखो ना, एसएम क्या है? बस नहीं एसएम नाम से है वो, एस देखो एस। पीपीटी का क्या है ये? सिंबल देखो एस एस On list of outside the participants, I'm just एसएम reading का out the किधर names. दिख रहा है Please देखो? raise your hand. This Pankaj Shingote is present over here. नहीं ये Have नहीं you और एक confirmed the है name? This is the name you want on certificate. And we have this अच्छा, Mahesh mail में भी है। Gopinath Mali. Not over here. पेन ड्राइव में है। Swati ये कौन सा है? Avinash Viratkar. मेरा मेन पेन ड्राइव कौन सा है? It's marked over here. Left it or they're not over here. हाँ बट मेरा का रूट डायरेक्टरी है क्या? And this. मुशर्रफ सर जरा एक मिनट हाँ इसके रूट डायरेक्टरी में मेरी फाइल थी पीपीटी, बट यहाँ पे नहीं दिख रही है। And Anita. किधर रहेंगे फिर वो? एक मिनट एसएम नाम से एसएम पीपीटी एसएम एफडीपी Sri Suhas. एसएम एफडीपी पीपीटी थी वो, ये पीडीएफ Names आपके सबके ये तो मेल में है मेरे, यहाँ पे मेल उतरता क्या, डाउनलोड होता क्या? अभिषेक बंगाल. ये एक्चुअली कौन सा ड्राइव है? यूएसबी एक मिनिट मध्येच आहे एसएम नावानी Then we have Premnath. पीपीटी आहे ESM नहीं वो नहीं ये पीडीएफ है सर। पीपीटी नहीं पीपीटी नहीं दिख रही मैडम। अच्छा माझ्या मेल मध्ये आहे। आता मेल बॉक्स मेल वर करूला इथे येईल का? देखो इसका कौन सा ड्राइव? ये वही ना वही तो ओपन किया है मैंने। ये है, इसको फॉरवर्ड कर दो क्या अभी? कैसे फॉरवर्ड करोगे? सर फॉरवर्ड तुम्हाला करू सर? ग्रुपवर टाका। ग्रुपवर टाकू? अच्छा रुको सॉरी हाँ त्याच्यात आहे त्याला ओपन करते आणि शेअर कैसा करने का शेयर इसको? ओपन करके नहीं करनी, डायरेक्ट करना। ये हो जाएगी किधर से? ओपन शेयर आता ऊपर। जान दो आगे किसका तो ले लो मेरा इसके बाद चलेगा। तुम्हाला मेल करते मला तेवढं आणून द्यायच्यात। व्हॉट्सअपवर शेअर करा। बरं ठीक आहे। बरं लगेच आपल्याला ती डाउनलोड करा। इसमें है सर लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। इसके रूट डायरेक्टरी में सामने ओपन ही रखी नहीं ना, यहाँ पे दिखना। ये पीपीटी पर ऐसा असतं का? नहीं ही जेपीची फाइल है ते। मैं कर देती आपको, अभी किसी का तो ले लो। चलिए ये मेरा है ना, निकालूं मैं? निकाल। एक काम करेंगे भाई ऐसे बैठ के आपको भेज देते मैं। इतना मेल बॉक्स ऊपर का व्हाट्सएप यहाँ पे सामने ही ओपन है। हेलो, जिनकी स्क्रिप्ट है और पीपीटी है वो पहले कर लेते हैं हम। सिर्फ पीपीटी वाले जो है ना वो आफ्टरनून सेशन में करेंगे। अगर क्योंकि स्क्रिप्ट का सेटअप लगाया हमने यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट जिनकी है यहाँ पे आ जाओ, पहले स्क्रिप्ट सेट कर लो और पीपीटी तुरंत पेन ड्राइव में लेके आगे इस लैपटॉप पे आपको पीपीटी चलानी है और या इस लैपटॉप पे आपको स्क्रिप्ट चलानी है। सर आपका स्क्रिप्ट है ना, आओ ना जल्दी आओ। सुबह से आप मुझे पूछ रहे हैं, अभी बोल रहा हूँ अभी कौन सर आप ले रहे हो क्या सर? सर कौन ले रहे हैं? मतलब नहीं उनका नहीं है। आप ये चलिए आप स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी करो,
स्क्रिप्ट अरेंज करता हूँ अपना मैं नाम टाइप करूंगा उसका, आप स्क्रिप्ट कॉपी करके उनको दे दो। हाँ, उनको दे दो स्क्रिप्ट, और उनको आपको पता है ना आपके पेन ड्राइव में पीपीटी कहाँ पे है, वो डायरेक्टली उस लैपटॉप पे आपको ओपन करनी है। 2 बजे लंच एग्जैक्ट 2 बजे ओके, जब तक सेट लगा देंगे लैब में। हाँ। और वो वीडियो इस पे नहीं जा रहा शायद, जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, कौन से जो वीडियो यहाँ शूट हो रहा ना, हाँ, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को नहीं दिख रहा, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। जैसा भी इनका हुआ शूट हुआ तो उनको वो लाइव नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है ना, ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये जा रहा है ना, ये देखो ना, ऐसे जा रहा है ना, ये इस टाइप से। हम एक तो ये दिखा सकते हैं, ओबीएस दिखा सकते हैं, नहीं तो ये कैमरा से शूट दिखा सकते हैं। हाँ, ओबीएस ही दिख रहा है उनको, फाइनल आउटपुट नहीं दिखेगा उनको। दाखवायचं नाही का? कसं दाखवणार, प्ले केल्यावरच दिसेल ना। सर का नाम नाव पण उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। हम स्पेक्स जैसे लगाते हैं ना, जैसे स्पेक्स लगाते हैं हम, चश्मा लगाते हैं ना हम, चश्मा, हाँ, उल्टा लगा दो, वो कान पे आएगा, वो जो उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ। ओके, एक मिनट। माइक कैसे लगाते हैं एक बार देख लो आप। ये यहां पे इसका पिकअप है जहां से वो आपकी आवाज ले रहा है। अगर ये डायरेक्टली आपके मुंह के सामने आता है तो आपके जो ब्लोज है ना, वो ब्लोज भी इसमें चले जाते हैं, फट 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 जो ब्लोज आते हैं वो ब्लोज भी चले जाते हैं। तो हमारा ब्लोज का एरिया कहां पर रहता है, ये हमारा ब्लोज का एरिया है, तो इसके थोड़ा नीचे रखना है हमें, ऐसे नीचे दिखा तो मैं आपको, ये लगा दिया यहां पे। ओके, हमारा चश्मा रहता है ना, चश्मे की तरह ही वो अटक जाता है, चश्मा सिर्फ सामने से रहता है, ये पीछे से रहता है। ओके, अब ये जो ब्लोज है ना, ये आपको नीचे लगाना है, ऐसे हमारे ब्लोज के बीच में नहीं आना चाहिए, ये ऐसे थोड़ा नीचे। ओके, सीन पण घ्या ना. और एक सीन लेते हैं हम जिसमें सिर्फ हमारी पीपीटी रहेगी और उसको हम ट्रांजिशन देंगे। ठीक है, और एक सीन लेंगे, इसका नाम रखेंगे पीपीटी, ओनली पीपीटी, ओनली पीपीटी। ओके, अब इसमें हेलो, इसमें फिर से हमें एनडीआई लेना पड़ेगा क्या? वही तो कैसे? प्लस को क्लिक करना पड़ेगा, एनडीआई सोर्स। अब यहां पे क्रिएट न्यू नहीं, ऐड एग्जिस्टिंग, तो लिया ना हमने उसे,
पहले सीन में, तो अब दूसरे सीन में हमें सिर्फ ऐड एग्जिस्टिंग करना है, ऐड एग्जिस्टिंग लैपटॉप, ओके, कंट्रोल F। अब जब भी मैं VFX पे क्लिक करूंगा तो ऐसे दिखेगा, और जब मैं PPT पे क्लिक करूंगा ऐसा एनिमेशन मिलेगा मुझे। स्लाइड शो, स्लाइड शो, एक मिनट, F5 उस पर नहीं होगा, फंक्शन F5 करना पड़ेगा। एक मिनट, ये लगा दो, ये इससे आप नेक्स्ट ले सकते हो, करके देखो। उनकी पीपीटी जो है वो 4:3 है, 16:9 नहीं है। ठीक है, करते हैं शुरू। ओके, अब बीच बीच में क्या करूंगा मैं, स्विचिंग करूंगा मैं। वैसे हम और एक सीन भी बना सकते हैं, थर्ड सीन, ओनली टीचर। तो जिस वक्त आपको कम्युनिकेट करना है तो उस वक्त सिर्फ टीचर ही दिखेगा। प्लस ओनली टीचर, ओके। इसका जो बैकग्राउंड रखेंगे हम, 6-7 है ज्यादा, इमेज बैक टू, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम, ब्राउज, वर्चुअल सेट, इसको कुछ नहीं, ऑनलाइन, नाही काहीतरी दुसरीकडे बडबड चालली त्यांची। आपका सब्जेक्ट कौन सा है सर? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है, वो बैकग्राउंड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा फिर, पैसे वाला अभी नहीं है नेमका। ते माइक बंद करा ना त्यांचं। सीमा मैडम, सीमा मैडम, सीमा मैडम, माइक बंद करा तुमचा। नहीं, एडमिन राइट्स नहीं है हमें। हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक, हाँ हाँ, नहीं अभी OTP आया एक, हाँ अभी एक पण ते सीमा मैडम निकाल के, मैडम हाँ इसी माइक बंद करा। अरे उन्होंने मोबाइल, अच्छा वाहन से भी आया था तो हमने उनको बताया। हाँ मैंने कौन सा बंद कर दिया? उनको बोलिए कि इसी पे आएंगे, जो भी आएंगे इसी पे भेजिएगा। हाँ अभी एक आया। हाँ हाँ, रिमूव नहीं कर सकते ना इनको? हाँ गाड़ी लेगा, अभी तो गाड़ी लेने आना है ना आपके पास। एडमिन नहीं है, कोरे सर होस्ट है, कोरे सर को बुला। एडमिन राइट्स नहीं है, एडमिन राइट्स कोरे सरांकडे। सीमा मॅडम, त्यांचा मोबाईल नंबर बघा बरं तुमच्या रजिस्ट्रेशन मध्ये। हाँ अभी आया ना, अभी मैं दिया उनको, OTP आया तो उनको नंबर कॉल आया, दिया उनको बोल के रखिए कि इसी नंबर पे भेजेंगे, यही नंबर मेरा एक्टिव है और अभी सारे मैसेज हमारे इसी में जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, ओके, थैंक यू। झाला बंद? ठीक है, थैंक गॉड।
परत चालू केलं त्यांनी माईक. असतील तर त्यांना फोन करून सांगा. सीमा मॅडम हॅलो. सीमा मॅडम तुमचा फोन बंद करा. सीमा निकालचे मॅडम 1973 बहुतेक बर्थडे साल दिसते त्यांचं. हा आम्हाला कळतंय तुमचा फोन नाही आलेला. ऍडमिन राईट्स नाही तिथे नेमके. कोरे सर नेमके बाहेर गेले. ठीक आहे ठीक. तसं काही नाही. बॅकग्राऊंड तसं हा. एक मिनिट. व्हिडिओ कॅप्चर डिवाइस एड एग्जिस्टिंग कैमरा. ओके एड एग्जिस्टिंग उसको हमने इफेक्ट दे दिया है. हेलो यही से बंद कर दिया. लेकिन ऑनलाइन वाले को प्रॉब्लम है. हाँ ऑनलाइन वालों को वो दिखते रहेगा उनके सामने. हाँ ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट है उनको वो क्या करें नॉलेज ब्रिज को पिन करके रखे. ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट है प्लीज पिन टू नॉलेज ब्रिज. माइक बंद करो ना मैडम. ऑनलाइन क्लास म्यूट करो ना मैडम. नहीं ऑन था मैडम. आपसे आपके बात तिकडे रेकॉर्ड झालेत ना ते. याला युट्यूबला लाईव्ह चाललंय ना ते सगळं. हाँ अभी किया उन्होंने ऑफ. ठीक है अभी क्या किया. हेलो हेलो हेलो. नहीं अभी कुछ आवाज नहीं है. क्या किया हमने 3 सीन बनाया. एक में क्या रखा है ओनली टीचर ओनली पीपीटी एंड वीएफएक्स. कैसा रहेगा अब. हाँ लेकिन अब इस तरीके का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको अपनी स्क्रिप्ट में वैसा मेंशन करना पड़ेगा ओनली टीचर ओनली पीपीटी वीएफएक्स. क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वक्त मुझे सिर्फ टीचर दिखाना है. हाँ 3 अलग अलग चीजें हैं. ऐसा कभी वक्त आता है वीडियो बनाते वक्त जब हम कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ. हेलो दोस्तों आज हम ये चीज देखेंगे. तो इसका पूरा हम कुछ ब्यौरा बताते हैं. हम कुछ चीजें बताते हैं कि हाँ इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं. चलो तो हम शुरू करते हैं. उस वक्त क्या दिखना चाहिए टीचर प्लस पीपीटी. और जब कोई डिस्क्रिप्टिव पीपीटी है आपकी और उस वक्त सिर्फ आप बोले जा रहे हो उसको पढ़ना है उस पीपीटी के अंदर तो फिर वहां पे क्या दिखना चाहिए ओनली पीपीटी. तो ये आपके स्क्रिप्ट में आएगा. जो स्क्रिप्ट यहां पे स्क्रॉल हो रही है ना उसमें आएगा ओनली टीचर. वो आपको पढ़ना नहीं है. ओनली टीचर पढ़ना नहीं है. वो सिर्फ आपको उसको क्या करो रेड कलर में डाल दो. तो वो इंस्ट्रक्शन किसके लिए ऑपरेटर के लिए. ऑपरेटर सिर्फ वहां पे आपको क्या करेगा सिर्फ टीचर दिखाएगा सिर्फ पीपीटी दिखाएगा. ओके अब पीपीटीला पण द्यावं लागेल आपल्याला. ऑडिओ इनपुट कॅप्चर ऍड एक्झिस्टिंग माइक अँड ओनली टीचर. हो ऑडिओ इनपुट कॅप्चर माइक. इकडे ग्लोबल डिव्हाइसेस मधून पण होतं. ठीक है पहले ओनली टीचर. अब थोड़ा सा ड्रेस कोड के बारे में समझ लो. ड्रेस कोड जब भी आपका फाइनल प्रोडक्शन रहेगा प्रोफेशनल लेवल पे कंटेंट प्रोडक्शन रहेगा तो ड्रेस कोड आपको डार्क ही रखना है. लाइट नहीं प्लेन डार्क कलर. जैसे ब्लेजर रहेगा. आप टीवी पे देखते हो वो लोग ब्लेजर क्यों पहनते हैं. हाँ कुछ जैकेट्स क्यों रहते हैं डार्क कलर क्यों रहता है. क्योंकि जितना आपका ड्रेस का कलर डार्क रहेगा उतना आपका चेहरा खुलेगा. ये कैमरा का प्रिंसिपल है.
नहीं सूट नहीं होगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। ठीक है, करते स्टार्ट। स्टार्ट। Very good afternoon to one and all. Today I am going to present on the topic Mahamna's vision of education and national education policy 2020. Mahamna Madan Malvi's vision of education is highly comprehensive and it is based on the philosophy of idealism, naturalism and pragmatism. He was in favor of holistic development of students as aimed in the present national education policy 2020. As per this policy, the aim of education will not only be cognitive development, but also building character and creating holistic and rounded individuals equipped with the 21st century skills. Malviji wanted to see physical, social, emotional, and cognitive development of the students, besides enhancing their aesthetic sense by including subjects like music, classical literature, religion in the curriculum. With quality education, he wanted to make people responsible citizens with all required skills to lead the nation on the path of all-round development. Malviji was a far-sighted and visionary leader, and he knew the need of the nation after getting independence, the Swaraj from the British regime. He used to say that our motherland needs a well-educated, skilled, trained, devoted citizens to serve the nation selflessly. This high ideal can be served only by giving proper education, training in the environment that is totally Indian. To make a sovereign and modern India, he goes back to the age-old Indian culture and tradition. National Education Policy 2020 draft contains the same views in its detail. NEP 2020 starts with the importance of education in its introductory paragraph as education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to education, quality education, is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice, equality, scientific development, national integration, and cultural preservation. Universal high quality education is the best way for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. Further, this draft highlights the need for universal high quality education for the future of the country. As per this policy, India will have the highest population of the young people in the world over the next decade, and our ability to provide high quality education opportunity to them will determine the future of our country. Commitment with the world community, India has adopted agenda sustainable development and its goal 4, which seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. Mahamna was of the view that education should solve the contemporary problems. Curriculum cannot be fixed for all times. It should cater to the need of economy and society. In this sense, Mahamna was far-sighted and at least 1 century ahead of his own time. His approach is universal, that is beyond the purview of time and place. He was in favor of making a delicate balance of modern science and technology with ancient culture and literature. He wants to give students opportunity to be skilled and get vocational training so that they could be gainfully employed and contribute to the development of the nation. Malviji had mentioned many arts, crafts, occupations and vocations to be given to the students during the course of their study. He was not only idealist but highly pragmatic when he talked about the design of the curriculum.
can contribute to the economy and society positively. India, a country of demographic dividend, needs education policy based on the vision and philosophy of Mahatma Madan Mohan Malviya. He perceived the need of 21st century India in the beginning of the 20th century. Today, India is home to the largest population of the world, and we are blessed with the more working age population, termed as demographic dividend. If we educate and train our people in various fields and skills, then only we can transform our demography into a fruitful human capital. This is the only way. This is the only way to make make our country a stronger, powerful nation in the era of globalization, liberalization, and privatization. India can achieve its erstwhile status of Vishwaguru, and its people will be a global citizen. NEP 2020 documents endorses all these aspects of education and tries to address future needs of the economy. To literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capability of the learners. Moreover, education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for the gainful employment. The curriculum must be based on the knowledge of India, that will include knowledge from ancient India and its contributions to modern India and its success and challenges. Finally, it can be concluded that National Education Policy 2020 has tried to include vision and mission of Malviya in letter and spirit. Malviya was a visionary and nationalist in the true sense. He advocated that education should provide the solutions of contemporary issues, so that curriculum must be designed to address the challenges of the society and economy. The present era is the era of high demand for skilled and vocationally trained persons. We have to transform our population into human capital so that we can lead the economy on the path of development. Thank you. हेलो काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तिथे जी आहे ना, तिथे जी केबल लिहायला जोडली आपण, ती त्याला जर जोडली तर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. त्यांना पीपीटी डायरेक्ट टेलिप्रॉम्प्टर मध्ये दिसेल. थांबणार नाहीत ते.
HDMI केबल कुठे आहे? एक मिनिट. एक मिनिट, केबल चेंज करनी पड़ेगी. लाला कुठे सर? कॉपी करून घेतो. ये है ना सर, डायरेक्टली में है पेन ड्राइव. HDMI. लाला कपलिंग दे बर, कपलिंग. अर्जंट. आपको पीपीटी यहाँ पे दिखेगी. नहीं, आगे आपकी पीपीटी. हाँ, अब यहां पे क्या किया? हेलो, ये जो टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन है, टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन का अब तक हमने क्या इनपुट दिया था? स्क्रिप्ट का इनपुट दिया था. अब हमने क्या इनपुट दिया है? ये जो लैपटॉप है, मैडम की जो पीपीटी है, उसका आउटपुट हमने टेलीप्रॉम्प्टर को डायरेक्टली दे दिया है. अब उनको क्या है? उनकी पीपीटी, खुद की पीपीटी डायरेक्ट सामने दिखाई दे रही है और वो पीपीटी उनको पढ़नी है बस, या पीपीटी को प्रेजेंट करना है. आपका वीडियो अपलोड हो रहा है व्हाट्सएप पे. टेक्स्ट. हाँ, नाम SWALEHEA. हाँ, तो अच्छा, एक छोटा बराबर. अभी हाफ हो गई वो तो.
ये क्या प्रॉब्लम है? चालू चालू में पिन निकालनी और जोड़नी नहीं है, बस ये टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। अभी सेशन चल रहा था हमारा, एनडीआई वर्किंग में था ना हमारा, और एनडीआई फायर कर रहा था, उसका आउटपुट हमें ओबीएस में मिल रहा था। उसी वक्त हमने क्या किया, एचडीएमआई की केबल उसमें ऐड कर दी। आपको क्या करना है, अगर आपको केबल लगानी है, कुछ नया सेटअप करना है, तो कंप्यूटर शटडाउन करो, सेटअप करो और उसके बाद कनेक्ट करो। आ गया? या करे सुरू मॅडम? मग एक टाकला की तोच कंटिन्यू होतो आहे त्याच्या सेटिंग मध्ये। तुम्ही सेटिंग चेंज करून मग तो वेगवेगळे ट्रान्झिशन, तुम्ही प्रत्येक सोर्सला वेगवेगळे ट्रान्झिशन देऊ शकता। एक असं येणार, एक असा येणार। आता ओनली टीचर जो आहे, राईट क्लिक, ट्रान्झिशन ओव्हर राईट, इथं फेड आहे, कट आहे। आता इथे फेड घेऊ आपण। तर आता ओनली पीपीटी व्हीएफएक्स घेतलं तर असं येतं, आणि ओनली टीचर घेतलं तर असं येतं। आता हा ओनली पीपीटी असं येतं। हाँ चलो ठीक है, करते स्टार्ट। Let us understand today how computer performs addition. As we know, there is a number system is there. समझ में आ रहा है आपके? हाँ, ये साउंड नहीं इनका जो आई का जो कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा है। स्क्रिप्ट अगर है ना, तो स्क्रिप्ट हम पढ़ते ही जाते हैं, वो सामने हम देखते रहते हैं। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर हमारे क्लासरूम में तो हमें वही आदत है ना, इधर देखना इधर देखना। मैडम, आपको जो कुछ भी बोलना है वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के, पीपीटी की तरफ देख के ही बोलना है, बाकी किसी भी तरफ आपको नहीं देखना है। ठीक है, स्टार्ट। Good afternoon. Let us understand how computer performs addition. We know decimal number system. We are using decimal number system in our day-to-day life to represent quantity. For example, if I ask you how many boys are there in class, you can answer easily. There are the 30. 30 you can say because you have learned decimal number system. Decimal number system makes use of digits 0 to 9. And these digits are combined to form number to express largest quantity. Computer works on binary number system. Binary means 2. Means computer uses only 2 digits, 0, 1, which are normally called bits. Why 0 and 1? Because computer is an electronic machine. It will work on voltage current. It can sense voltage current. It will represent output voltage current form only. So it is very easy to give full voltage, no voltage as an input to computer. No voltage or 0 volt means bit 0.
full voltage given to computer means bit 1 is given to it. In this way, any number in terms of 0 and 1 can be given to computer. So thus 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 are the few numbers I have shown in my PPT. And here I have written that means 1101 means 13 decimal number. Now see, to add two number is a great task for the computer. Let us understand how it adds 2 bits. So we learned today half adder. It is the circuit which can add 2 bits. Remember 2 bits, not the 2 binary numbers. So let us understand simple circuit for addition of 2 bits. So this slide shows half adder as a block. A circuit we'll see later, but half adder as a block, it will have 2 inputs, A, B, for the 2 bits. And these A, B bits will be added, and the sum bit and carry bit will be provided at the output. Now, how that circuit is formed? To understand this, I will introduce here AND gate. AND gate also XOR gate. So, in brief, I will tell you about gate. Gate is digital circuit which can have 2 or more, 1 or more inputs, but only one output. Such a circuit is called gate. It is also digital circuit, please note. Because at input you can give low voltage or high voltage, output will be low voltage or high voltage. So here is one symbol above diagram on this current PPT. Above diagram is AND gate, and below diagram is its truth table, means action table. So in the truth table I have shown A, B inputs and output of the gate produced. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, all 4 possible combinations of input. And output is produced 1 only when A and B both are 1. So note here that symbol right now you may forget, but note here that there is a gate whose output is 1 when A and B both 1. In this sentence, AND word comes. That's why this gate is given name AND gate. So thus, conclusion of this PPT is, this slide is AND gate. Its output is 1 when A and B both 1. Next gate, exclusive OR gate. I am introducing here. Above is a symbol of it, and below is its truth table, means action table. What is seen from the table? If odd number of inputs are 1, output is 1. Means odd number of inputs means 1 input, 3 input, 5 input, 7 input. In this way, odd number of input is 1, then only XOR gate will provide output as 1. Remember, here is a 2 input XOR gate I am used because I require, but there would be 3 input, 4 input, 5 input, multiple input XOR gate, and it will provide output 1 when output is odd number of inputs are 1. So in the table you will see when 0, 1 input or 1, 0 input. So this time there is an odd number of inputs, hence output is 1. So this is what XOR gate. See, this is the table which shows how in the table. This is the table which shows how adder will work. So inputs A, B, all combinations I have shown 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And the output will be sum and carry. So remember, so 0 plus 0, what will be sum? 0. Carry 0. I have written it there. 0 plus 1. Sum 1, carry 0. 1 plus 0. Sum 1, carry 0. 1 plus 1. Remember, this is a binary number system. Earlier, I have told you about the rules of binary addition. 1 plus 1, sum 0, carry 1. Okay, so this is a binary addition. If you take a decimal addition, 1 plus 1, you will write 2. But this is a binary addition, 1 plus 1, sum 0, carry 1. You have to write. This is what you need to remember a little bit, and over the time you will understand it automatically. So, observing this table of half adder, I found that some column express, if I consider A, B and sum, then it would be truth table of XOR gate. If I consider A, B and carry column, then it would be truth table of AND gate. That means
To add 2 bits, I just need 2 gates. One is XOR gate and other is AND gate. So XOR gate, I have shown in the diagram that XOR gate and gates are used. A, B inputs given to both gates, and XOR gates output will represent sum, and AND gates output will represent carry. Thus, this is a simple circuit which add 2 bits in a computer. Okay. To add 3 bits, there is another circuit which is also simple, and it is called full adder. To add 2 binary numbers, maybe 4-bit numbers or 8-bit numbers, we need to use half adder and multiple full adders to add these numbers. In this way, computer add 2 bits. Here I have shown, but it actually practically there are the half adder, full adder, which is part of ALU, and that circuit can add 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit, whatever the capacity of CPU. So that's all. I hope I told you the amazing technology and you understood. I have utilized time. Thank you. अभी जिनकी ओनली पीपीटी है ना वो हम पहले कर लेते हैं, स्क्रिप्ट वाले बाद में लेंगे सर, क्योंकि अगर मैं वो पिन निकालता हूं फिर से वो लफड़ा हो जाएगा। फिर जिनकी सिर्फ पीपीटी है डायरेक्ट लगाओ, प्रेजेंटेशन शुरू कर दो। मैडम आपका पेन ड्राइव नहीं, वो पेन ड्राइव नहीं, वो डोंगल है, वो रिमोट का। हाँ, इस साइड में एक यूएसबी सॉकेट है डॉक्टर। SY SASHMIN अच्छा अच्छा, बरोबर। सर कैमरा आपको ही करना पड़ेगा पीपीटी। ये पहली वाली को स्किप करो, थोड़ा कैमरा टिल्ट नहीं होणार, थोडं टिल्ट करायचं त्याला कॅमेराला, असं वर वर। बस 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 बस। एक मिनट, कहाँ पे पीपीटी? ठीक है, हाँ, उससे आगे ले सकते हो आप। एक मिनट, पूरा खड़ा, हाँ ओके, और आ गया, और आ गया, थोड़ा आ गया। थोड़ा ये दिख रहा नहीं, थोड़ा उचलावं लागेल कोरे सर याला, नहीं नहीं उसमें उसमें कोरे सर उचलावं लागेल थोडस। एक मिनिट, थोडं वर घेतो।
बस कर बैक। दिख रहा है सर स्क्रिप्ट? हाँ, टिल्ट आने दो, टिल्ट आने दो। वो एक्चुअली उसकी सेटिंग थोड़ी नहीं, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी है, झुकना पड़ रहा है और ऊपर उठाएंगे इसको। करो सर, हे सेट होत नाहीये नीट। ते तुम्ही समोरून जाऊन बघा बरं। ओके, करो शुरू। Good afternoon, everyone. I am Dr. Hamid Hashmi, Assistant Professor, Department of Commerce. Today I am going to present a lecture on the business finance topic. Business finance, the two words. One, business is to trade. Whatever the buying and selling goods and services, called as business trade. And the finance, whatever the amount or money required to owners to run the business or to start the business, or maybe a existing business to flourish or to extend the business, is called as finance. Under this business finance, now today we are going to explain about the time value of money. That is very important for the businessman. Every businessman has to take a decision, and this time value of money is for the decision making. As you know the very well, if you take or the businessman take the wrong decisions, so he will get the big loss, or might be possible that their business will close in future. If take the right decisions, might be possible that the businessman will get the more profit. So now today we'll go for the time value of money. The time value of money is the concept that a sum of money is worth more now than the same sum will be a future date due to its earning potential in the interim. The time value of money is the future based on the value of that assets in the present. The concept, there are four concepts: the time value of money, risk and uncertainty, inflation, consumption, investment opportunities. The future is always uncertain and risky. Outflow of the cash is in our control, as payment to the parties are made by us. There is no certainty for the future cash inflow. Individual generally prefer the current consumptions to
future consumption. To be received tomorrow or the after a certain period of time. Now, the formula for TVM, time value of money. The most fundamental formula for this time value of money take into account the following. The future value of money, the present value of money, the interest rate and the number of component period per year and the number of years. Based on these variables, the formula TV time value of money is FV is equal to PV in bracket 1 plus I divided by N in bracket close power N into T. T means time, number of times. Where the FV is the future value of money, PV is the present value of money, N is the number of component period, and I is the interest rate, and T is the number of years. The methods. Now we'll discuss about the methods of time value of money. There are 4 methods. Future value of lump sum method. Second, the future value of annuity method. Third, the present value of a lump sum method and present value of annuity methods. Now the future value of a lump sum method. The calculation of the future value of a lump sum is used when a business wants to calculate how much money it will have at some point in the future. If the makes one deposit with no future deposit or the withdrawal given an interest rate and a certain period of time, calculating the future value is also called as compounding. Second, the calculation for the future value of an annuity is used when a business want to calculate how much money it will have at the same point in the future. If it make equal consecutive deposits over a period of time given an interest rate and a certain period of time. Now the present value of lump sum method. The calculations for the present value of a lump sum is used when a business want to calculate the how much money is it should pay for an investment today. If it will generate a certain lump sum cash flow in the future given an interest rate at a certain period time, calculating the present value is also called as discounting method or discounting. The present value of annuity method. The calculations for the present value of an annuity is used when a business want to calculate how much money it should pay for an investment today. If it will generate a stream of equal consecutive payments for a certain time period in the future given a interest rate and a certain period of time. So that the graph will show that the 4 positions that we have discussed in the four method previously. The following graphs show the present value of the $1,000 100 years into the future. The curve presents the constant of discount rate 2%, 3%, 5% and 7%. These are the examples. So the graph like this. Thank you very much. Shall I stop? Oh, not. स्टार्ट
ये निकालेंगे। ओबीएस में हमें 3 फैसिलिटीज मिलती है, 3 फैसिलिटीज। एक, आप ओबीएस से रिकॉर्डिंग, वहां पे देखा आपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन है, आप लोकली वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो आपके कंप्यूटर पे। स्टार्ट कर दो, स्टॉप कर दो, आपका मिक्स वाला वीडियो बन के तैयार है। जिन्होंने वीडियो एडिटिंग की है इससे पहले, उनको पता होगा कि वीडियो एडिटिंग कितना टफ प्रोसेस है। अगर यही वीडियो एडिटिंग करके अगर हमें बनाना होगा तो ये 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे, कम से कम। और ये सिस्टम ये वीडियो ऑन द स्पॉट बना के देगा। तो यहां पे क्या करते हैं हम, स्टार्ट रिकॉर्डिंग को क्लिक करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, जो कुछ भी हमें मिक्सिंग करना है वो सब ऑनलाइन करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं। टीचर को कब दिखाना है, पीपीटी कब दिखानी है, और कुछ लाइंस वगैरह डालनी है, सारा ऑन द स्पॉट होता है। और जब भी हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे हमारे हाथ में वीडियो आ जाता है। जैसे वीडियो बना, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया। ओके, ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, उसके ऊपर एक बटन है स्टार्ट स्ट्रीमिंग। क्या कर सकते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग से? आप यूट्यूब, फेसबुक पे लाइव कर सकते हो। यानी जो कुछ भी चल रहा है, ये कैनवास में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वो डायरेक्टली लाइव होगा। अभी लाइव हो रहा है ये सेशन, अभी ये सेशन गूगल मीट पे भी लाइव हो रहा है, और इसी वक्त ये सेशन यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है। ओके, तो यूट्यूब पे लाइव करने के लिए हमने क्या किया है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पे क्लिक किया है। कौन से मशीन पे? इस मशीन पे, जहां पे शक्ति बैठा है, मिक्सिंग मशीन पे। एक्चुअली ये पूरा सेटअप अलग है, ये सेटअप अलग है। ये पूरा सेटअप का आउटपुट हमारे इस सिस्टम को जा रहा है, और ये सिस्टम एक्चुअली लाइव दिखा रहा है, और गूगल मीट चल रहा है। अब आपको ये जो कुछ भी आउटपुट चल रहा है, ये जो कुछ भी मिक्सिंग चल रहा है, अगर ये आपको गूगल मीट या जूम को देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा को क्लिक करना पड़ेगा, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। और आपको जो भी आप गूगल मीट ज्वाइन करोगे, गूगल मीट, न्यू मीटिंग, स्टार्ट मीटिंग। अभी अलग मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग अलग है, ये मीटिंग अलग है। अलाउ माइक्रोफोन एंड कैमरा, अलाउ। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग रहती है ना, सेटिंग, तो यहां पे आपको क्या करना है, इतना प्रोसेस समझ लो आप। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये सब मिक्स चल रहा है। यहां पे आपके वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां पे आपको माइक लेना है। कौन सा माइक? वही माइक जो हमने कनेक्ट किया था, वो माइक, एक्सटर्नल माइक। स्पीकर्स वही लेने हैं जो आपके लैपटॉप के स्पीकर्स है, स्पीकर्स। लेकिन वीडियो आपको चॉइस करना है ओबीएस वर्चुअल कैमरा। मैंने आपको बताया जूम या गूगल मीट में हम चॉइसेस ले सकते हैं। आपको कौन सा कैमरा, अगर आपके लैपटॉप को 2 या 3 कैमरास लगे हैं, मल्टीपल कैमरे लगा सकते हैं हम, मल्टीपल माइक्स लगा सकते हैं हमारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को। हमारे जूम में या गूगल मीट में हमें चॉइस दिया है कि आप उसमें से कौन सा कैमरा चॉइस करना है, ये आप चॉइस कर सकते हो। वो चॉइस का ऑप्शन कहां पे रहता है? सेटिंग में रहता है। जूम की भी सेटिंग है, वहां पे भी आप कैमरा चॉइस कर सकते हो। तो यहां पे आपको कौन सा कैमरा चॉइस करना है? ओबीएस वर्चुअल कैमरा। ओबीएस में क्या करना है आपको? स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। यानी ये पूरा मंजर बन रहा है, ये पूरा जो मिक्सिंग बन रहा है, वो पूरा मिक्सिंग वो क्या करेगा, आउटपुट देगा एज ए वेबकैम, वर्चुअल वेबकैम। और ये वर्चुअल वेबकैम आपको सिलेक्ट करना है गूगल मीट में या जूम में। ओके, तो ये 3 बेनिफिट्स ओबीएस के हैं। इस 3 बेनिफिट्स का यूज करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वीडियो उसी लोकल ड्राइव पे आपका वीडियो बनेगा। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, तो यहां ये जो कुछ बन रहा है इसका आउटपुट आप जूम या गूगल मीट को दे सकते हो, और स्टार्ट स्ट्रीमिंग लाइव कर सकते हो। और तीनों चीजें एक साथ हो सकती है। इस वो जो
व्हाइट वाला मशीन है VFX वाला, उसमें तीनों चीजें एक साथ हो रही है, लोकली रिकॉर्डिंग भी हो रहा है उस पर, गूगल मीट पे भी ये जो लोग है अभी ऑनलाइन उनको ये गूगल मीट पे दिखाई ये पूरा आउटपुट वो भी देख रहा है कि ये कैसे चल रहा है। उसमें तो ये कैमरा भी ऐड है। ये कैमरा का रोल इस सिस्टम का नहीं है, ये कैमरा किन लोगों के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। उन लोगों को ये कैमरा का आउटपुट दिख रहा है और ये जो दूसरा वाला छोटा कैमरा है उसका भी आउटपुट उनको दिखाई दे रहा है। जैसे शक्ति उसको स्विच करता है, अभी देखो अभी कौन सा कैमरा दिख रहा है, ये वाला मेन कैमरा उनको दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये जो लैपटॉप पे मैं सेटिंग कर रहा हूं, ये शक्ति ने उसकी स्विचिंग कर दी। अब वो दूसरा वाला जो कैमरा है छोटा वाला, एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, ये फाइनल आउटपुट क्या हो रहा है, टीचर एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन पे है लेकिन फाइनल आउटपुट तो कुछ तो भी अलग आ रहा है। तो ये ऑनलाइन वालों को भी समझ में आया कि एक्चुअली सेटअप क्या है, कैसे लाइट्स लगाए, कैसे क्रोमा कर्टन लगाए। तो ये दिखाने के लिए पूरा का पूरा ये 2 कैमरेज एंड ये सब यहाँ पे स्टफ चल रहा है। आ रही समझ बात? ओके, नेक्स्ट सर। लावा माईक सर. मागून टाका आणि ती टेबलावरून घ्या. येस करू शकू सर. स्टार्ट. गुड मॉर्निंग नमस्ते. 21वे शतक हे जसं डिजिटल स्टॉल व्हायचं आहे तसं 21वे शतक हे ताणतणावाचं शतक सुद्धा आहे. या 21व्या शतकामध्ये आपल्याला स्ट्रेस सामोरे जावं लागतं. सगळ्यांना स्ट्रेस येतो, प्रत्येक गोष्टीमध्ये येतो. आपल्याला प्रायमरी लेवलला एक चिमणीचं घरटं म्हणून आहे, त्यामध्ये चिमणीला सुद्धा ताण आलाय. तसं आजकाल विद्यार्थ्यांना सुद्धा वेगवेगळ्या पातळीवर ताण येतोय, बालवाडीपासून मग तो कॉलेज लेवलपर्यंत असतो. पण मग या स्ट्रेस मॅनेजमेंट कसं करायचं, ताणाचं मॅनेजमेंट काय करायचं आणि ताण काय येतो ते आपण पाहणार. या स्ट्रेस मध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत. दैनंदिन जीवनामध्ये काही गोष्टी आपल्याला एक्सेप्ट करावं लागतात, काही गोष्टी आपल्याला सोडावे लागतात. मग स्ट्रेस म्हणजे काय हे जर आपल्याला पाहायचं असेल तर बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला जाणवत असतात ज्या आपल्या मनासारख्या घडत नसतात. या स्लाइड मध्ये आपल्याला एखादा लहान मूल आहे, ते आपल्याला सांगते व्हॉट इज स्ट्रेस. त्याला कसं समजून सांगणार? तर त्याला असं सांगावं लागेल, तुला एखाद्या रूम मध्ये बंद केलं आणि इंटरनेट पण बंद केलं, आता त्यानंतर आणि बॅटरी सुद्धा 1% राहिली आहे, आता तुला कसं वाटेल? ते वाटण्याचं जे फिलिंग आहे ते फिलिंग म्हणजे ट्रेस. मग ट्रेस म्हणजे काय? ट्रेस याचा अर्थ घेतला तर ट्रेस म्हणजे सिच्युएशन दॅट रिलीज एनर्जी सिग्नल अँड स्टिम्युल. याप्रमाणे स्ट्रेसच्या वेगवेगळ्या माहिती आपल्याला येते आणि स्ट्रेस जेव्हा आपल्यावर येतो त्यावेळी आपल्या शरीरामध्ये आपल्या सगळ्या मेंदूमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल रिलीज होत असतात. इमोशनल, त्या केमिकलमुळे वेगवेगळे इमोशन येत असतात आणि ते इमोशन जेव्हा बॅड फिलिंग देतात, अनप्लेझंट फिलिंग देतात, त्यावेळी आपल्याला या गोष्टी सगळ्या सामोरे जावे लागतात. पहा, आपल्याला दिवसभरात आणि संध्याकाळचं पण रात्रीच्या वेळी पण वेगवेगळ्या ट्रेस येतात. त्या ट्रेसची कॅटेगरी आहे, त्याचे प्रकार सुद्धा आहे. मग कुठले ट्रेस आहेत आपल्याला प्रत्येकाच्या जीवनात? आपले जर आईवडील मोठे असतील म्हणजे मोठी माणूस असतील तर त्यांना फायनान्शियल स्ट्रेस आहे. काही जणांना आपली लहान बाळ आहे, रिलेशनशिप आहेत, ते स्ट्रेस आहेत. त्यानंतर आपण बिझनेसच्या बाबतीत असेल त्याला तो वेगळा स्ट्रेस आहे. काहींना हेल्थच्या, आरोग्याच्या बाबतीत स्ट्रेस आहे. असे वेगवेगळे पॉईंट आहेत. तुम्हाला कोणता स्ट्रेस आहे आणि या ताणतणावामध्ये त्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं हे आपल्याला पाहायचं आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाने आपल्या स्वतःचा ताण नक्की मला कोणता आहे, कोणत्या कॅटेगरीचा आहे हे ते पाहावं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्कीच
पुढचे हे कुठले ताण आहेत आणि त्याच्यावर कसं व्यवस्थापन करायचं ते पाहूया. धन्यवाद. थँक्यू. अच्छा. Good morning, boys and girls. Today you are going to learn about enzymes. Enzymes are very essential component in biochemistry. You can see the structure of enzyme and how तिथे बंद होत नाही ना. नाही नाही आमचा स्ट्रेस नाही आहे काय प्रॉब्लेम. What is an enzyme? In enzyme, it is having the active sites
and the substrates and inhibitors, they are binding to the active sites. Globular proteins, which is having the functions to catalyze and speed up the reactions and lowering the activation energy without being affected in the catalysis of the reaction. So enzymes are proteins in nature. They are having the globular proteins which catalyze the behavior of different types of enzymes, and they are having the different structures such as primary, secondary, tertiary and quaternary structures. Primary structures are linear sequence of amino acids. Secondary structures are alpha helix or beta pleated sheets. Tertiary structures, they are three-dimensional structures, and quaternary structures are forming the quadrant. The most important thing is here, enzymes, they are the digestive tract systems of the proteins, and even they are also found in blood, which are present in inactive form called as zymogens or proenzymes. So they are secreting in inactive forms, and wherever there is a necessity, at that time they are secreting. So enzymes are composed by the chain of amino acids which are folded into the very specific three-dimensional shape, and which is containing the active site, which is shown in the slide with the structures of the active sites, their enzymes and substrate. Active site is showing a region on surface of the enzyme which substrates will bind and catalyze a chemical reaction. Enzymes are highly specific for the type of reaction they catalyze for their substrate. Enzymes with high specificity and accuracy are involved in copying expression of genome. Current days, different types of the genome structures are determined for life science, and even new types of the diseases can be identified, and their antidote can be found when there is a genome is known for that specific viruses or bacteria. So these enzymes have the proofreading functions. For example, DNA polymerase. DNA polymerase is the important component of central dogma. Central dogma, which is having the components of DNA, RNA and protein. In the key lock model, it is showing that the enzyme is acting as the lock wherever the key is the substrate. So nomenclature of enzyme classification, which is having International Union of Biochemistry and Molecular Biology, has recommended the system of nomenclature for enzymes according to the enzymes assigned to two names. So either they are the common name or recommended name, and showing the systematic name which is in the form of the official name. Enzymes is characterized by a code called enzyme code, and this is also known as the enzyme commission, contain 4 digits or 4 figures. They are separated by a dot. First digits represent the class, second digit stands for subclass, third digit stands for the subclass or subgroup, fourth digit gives the serial number of the particular enzyme in the list. For example, here EC 2.7.1.1 for hexokinase. When you are looking to this example, the first digit 2 showing the class, second 7 is showing the subclass, third digit 1 is showing the subclass, and the fourth one also showing the serial number in the hexokinase. Now when you are looking to the enzymes nomenclatures, they are having the 6 classes here: oxidoreductase, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. Oxidoreductase is the oxidation reduction reaction. Transferases is a transfer of the group. Hydrolases, it is a hydrolysis of that molecule. Lyases, it is breaking down of the double bond. Isomerases, which exhibit the cis and trans configurations of enzyme. Lyases, which is showing the formation of the new molecule. There are different types of the factors affecting the reaction velocity. They are temperature, hydrogen ion concentration, substrate concentration, enzyme concentration, product reaction, and presence of activators and inhibitors. Out of these, I am showing only 2 examples here because of the scarcity of the time. The effect of the temperature which is showing the optimum is 40 degree, and that is near to the body temperature of the person. So in human body,
all the enzymes, they are showing their activity at the 37 degrees centigrade. So this is a very important point when you are learning about the enzymes, and all our body enzymes, they are carrying out the reactions at this rate. So this, when you are looking to the another example is the pH. In the pH you can see the reaction velocity and the pH, those factors, they are showing the parameters for the pepsin and trypsin. Pepsin is the highly acidic, however the trypsin is the digestive enzymes which is present at the alkaline level. Here the quite interesting thing is that the cold drink Pepsi name got from this pepsin enzyme, so which is act as the digester. So out of all these enzymes, different types of the parameters, I have shown here the temperature and pH, which are playing the key role for the digestion process, and how these enzymes are having role in our body. They are the key factors, and this enzyme is having the significance for the designing the new drugs and the new medicines in the current era. So learning about the enzymes is quite interesting thing, and it is a quite vast area. So for the today's, and in the short note, I am completing this. Thank you very much. Thanks for your attention. If there is any positive, negative comments are there, that can be also committed. No problems. Thank you. So the process is that everybody has to close there, because I am stumbled there. So previous PPT was open. So they have to close their PPT. BAJJ, no, not doctor. I'm not doctor. BAJJ. BB. Yes. AQUEE. हेलो, मैंने बोला था डार्क कलर की ड्रेस चाहिए। हाँ मैडम, आपका भी वो स्कार्फ नहीं चलेगा, क्योंकि वो ग्रीन टू ग्रीन मैच हो जाएगा। हाँ हाँ, आप जाके देखो ना, 1 मिनट देख सकते हो आप। मिस्टर इंडिया टाइप हो जाएगा वो। वो जहां पे ग्रीन है ना, एक्चुअली कंप्यूटर को पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होता, उसको कलर आइडेंटिफाई होता है। वो क्या करेगा, ग्रीन से मैचिंग जो कुछ भी कलर्स है उसको ट्रांसपेरेंट बना देगा। यानी आप सोच सकते हो, अगर मैं क्रोमा कर्टन से ओढ़ के पूरा लपेट के अगर उसके अंदर जाता हूं तो क्या होगा? हाँ?
हाँ प्लेन आ रहा है. जैकेट चेंज कर दोगे आशमी सर? थैंक यू सर. ग्रीन तो ग्रीन तो नहीं चलेगा, ग्रीन से मैचिंग कलर भी नहीं चलेंगे. बस होगा. बोलो सर. तो बड़ा हो रहा है. हाशमी सर 2 जन आ जाएंगे इसमें. चिमटा आहे का आपल्याकडे? पाठीवरून चिमटा लावलास. माझं काय मी काय म्हणत होतो, असं होऊ शकतं हा. का स्टुडिओ मोडला गेलो आपण, आता हा बदलू शकतो ना आपण. तर याच्यामधला जो कॅमेरा आहे आता तो मग अशी आपण काय केलं होतं, हा खाली वाढला होता ना का नाही तसं मी याला कट केलं होतं. अहो एक मिनिट थांब यांना सांग. जे अडचण आहे ती नीट समजून घे. आता मी शूट करतोय. आता माझं बोटच येत नाही त्याच्यात शूटिंग मध्ये. मग कसं घ्या आता ह्या कॅमेराला तुम्ही काही सेटिंग करा, हा बोट आणून दाखवा आतमध्ये. नाही येणार ना, कारण ते कॅमेरातच उभे राहिले ना. ओके आउट ऑफ फ्रेम गेले. हा शो करना पड़ेगा सर पीपीटी को. एक मिनट. स्लाइड शो स्लाइड शो स्लाइड शो. सेकंड से शुरू करना है. फॉन्ट बहुत छोटे. थोड़ा नीचे. हाँ नहीं थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा उस माइक को. ये रिमोट है इसका. जैसे ये जो बटन है इससे वो आगे आगे की स्लाइड आएगी, इससे इससे पीछे वाली स्लाइड आएगी. Start. Good afternoon, everyone. Today I am going to give a presentation on financial management. Financial management is concerned with the procurement and effective utilization of funds for the benefit of the stakeholders. That means the funds are to be brought into the business and it should be utilized. The thing is that bringing in the funds is easy, but utilizing is difficult. So first we have to estimate how much financial requirement is there. So for that estimation, the capital requirement of the firm can be divided into 2 groups. One is fixed capital and the other is working capital. Fixed capital, whenever we bring in the money for the purpose of purchasing of fixed assets, that is called as a capital budgeting decisions. Capital budgeting decision involves a huge outlay of funds in which the assets are purchased by the firms. In working capital management, the day-to-day requirement of the firm is concerned. Here we are dealing with the outlay of money which is in a huge amount. Now there are certain methods from which we can find out how much money will be required and which proposal will be beneficial for the company. So there are methods called as payback period, net present value method, and internal rate of return and profitability index, by which we can find out
the requirement of the funds and which proposal is better than the other. We can compare two proposals or two machines or two projects. If we want to implement which project is better than the other, we can do it. The first method is the payback period. Now this is a traditional method. That means we compare the two proposals and find out that okay, this first proposal gives the money back easily within the stipulated time, so we will go in for that. This is a traditional method. Suppose take an example of 5 lakhs 5 lakhs of rupees in project one project and 4 lakh rupees in the other project. So we will find out the cumulative cash flows in it. When we find out the cumulative cash flows, inflows, cash inflows are there. Suppose for in the first year it is 2 lakhs, second year it is 1.75 and 25, like this. The cumulative cash flows in the first projects for rupees 4 lakhs comes around in 3 years. That means in 3 years we can recover the cost of the project. Now consider the project B. In the project B, when we find out the cumulative cash flows, the output comes within 2 years and 3 years, in between that, because the project B is having the outlay of 5 lakh rupees. So 3 lakhs and 6 lakhs, in between that means 2 years and 3 years, in between second year and third year. So after finding out 2 years plus the amount of cash which will be recovered in the next year will give you 2.67 years. That means in the project B you can recover the money in 2.67 years. So when we compare both the projects, we find out that in project B the recovery of money is within fast time, so we will consider this project rather than considering the project A. Then the next method is accounting rate of return. That means here accounting rate of return will measure the profitability of investment. That means in certain project, if you are investing, then what will be the profitability in that. So there we have to find out the average investment. The average investment will be book value of the investment at the beginning of the project and the book value at the end of the project divided by 2. Now book value of the investment at the beginning of the project is the initial outlay which you are investing in that project, and book value at the end of the asset at the end of the project will be the deduction of salvage value from the original value. So again, for example, if there are two projects, X project cost 4 lakhs, estimated life is 5 years, salvage value is suppose 30,000, and the cost outlay is given as 3,000, 4,000, 7,000 likewise. So average income comes out to be 28,000 and which is divided by 5, because within 5 years it is your money is coming back. So it will be average income will be 5,600 and average investment will be 21,500 for the first year, and for the likewise for the second machine it will be 31,500. So average rate of return will be 5,600 divided by 21,500. According to the formula, it will be 26%, and average rate of return for the project B will be 19.7%. Now depending upon the profitability expectation of the firm, you will consider this project. If any project which has less than the expected ARR, then the minimum rate fixed by the management is accepted, else the project will be rejected. When the projects are to be ranked for deciding on the allocation of a capital of the need of the capital rationing project,
with higher RR are preferred to the ones with the lower ARR. Thank you very much. These are the two methods which I have discussed today. Thanks. अब लंच ब्रेक है, हाँ, एक आधे घंटे में हम फिर से वापस आएंगे और नेक्स्ट शूट जो है वो शुरू करेंगे. ऑनलाईन पार्टिसिपंट्स, लंच ब्रेक आहे एक अर्ध्या तासाचा, पण सेशन जो आहे वो सेशन चलता ही रहेगा. डिस्कनेक्ट केलं तुम्ही? डिस्कनेक्ट केलं का? स्टॉप रेकॉर्डिंग. स्टॉपच करू टाका. बस लाईव्ह चालू ठेव. एक मिनिट आपण इथे बनवू. तर आत्ताची व्हिडिओ व्हॉट्सअपला टाका. ठीक आहे. दो अलग अलग चीजें करने बता.
नमस्कार. दुसऱ्या दिवशीच्या दुपारच्या सत्राची सुरुवात आपण लवकरच करत आहोत. थोड्याच वेळात दुपारचं जे दुसरं सत्र आहे ते सुरू होत आहे.
गुगल मीट तिकडे बंद झालंय. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ दिख रहा है. हाँ कीजिएगा. ऑनलाईन सेशन मध्ये सर्वांचं स्वागत. कैमरा तो थोड़ा बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं अभी. ओके ये चलेगा. बहुत सारे टीचर्स की पीपीटी जो है ना तो 4:3 है, इस वजह से टीवी में मैंने वो नहीं बैठ पाती. मतलब वो स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो ऐसे स्ट्रेची दिखेगी वो. हाँ 16:9 होना चाहिए. नहीं वो अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा लंबा लंबा दिखेगा वो. चलो शुरू करते हैं. ठीक ठीक सर. शुरू करें. करो शुरू सर. ठीक है, ओके. माइक थोड़ा ज्यादा सामने आ गया. राइट, थोड़ा नीचे ऐसे. हाँ स्टार्ट. अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद. बिनामी खुदावंद जानो खैरत. अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है फ़ारसी ज़बान का असर मराठी ज़बान पर. जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ारसी ज़बान सदियों से इस मुल्क की सरकारी ज़बान रही है और इस मुद्दत में उसने हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और ज़बान व अदब पर गहरे असरात छोड़े हैं. फ़ारसी ज़बान ने न सिर्फ उर्दू ज़बान को मुतासिर किया है बल्कि हिंदुस्तान की दीगर इलाकाई ज़बानें भी फ़ारसी के असरात से मुस्तफ़ीद हुई हैं. उन्हीं में से एक रियासत महाराष्ट्र की ज़बान मराठी है. फ़ारसी 3.5 सदियों यानी 14वीं सदी के आगाज़ से 17वीं सदी ईस्वी के वस्त तक महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान रही है और ये आम कायदा है कि हुक्मरानों की ज़बान का असर रियाया की ज़बान पर पड़ता है और मराठी भी इस कायदे से मुस्तस्ना नहीं है. 14वीं सदी के आगाज़ में देवगिरी के यादव हुकूमत के ख़ात्मे और दक्कन में मुस्लिम हुकूमत के क़याम के नतीजे में मराठी ज़बान ज़वाल पज़ीर हुई और उसकी जगह फ़ारसी ने ले ली और फिर अगले 350 सालों में उसने जो असरात मराठी ज़बान पर मुरतब किए हैं हम इस पेशकश में आपके सामने उन असरात की एक झलक पेश करने की कोशिश करेंगे. इस दौरान न सिर्फ अल्फाज की आमद हुई बल्कि कवायद के लिहाज से भी फ़ारसी ज़बान ने मराठी ज़बान को मुतासिर किया है. जैसा कि हम यहाँ पर कुछ मिसालें पेश करेंगे. जैसे मराठी ज़बान में हालत इजाफ़ी यानी पॉजेसिव केस जो वो फ़ारसी ग्रामर के मुताबिक हमने कई जगह देखा है. जैसे उसकी कुछ मिसालें हैं मौज़े हवेली, जिले पुणे, हवलदार इमारत. उसी तरह से मराठी अल्फाज की जमा बनाने के लिए फ़ारसी अलामात जैसे अलिफ नून व अलिफ ता का इस्तेमाल होता है. जैसे देशमुख से देशमुखान, देशपांडे से देशपांडियान और सूबे से सूबेजात. ऐसे ही फ़ारसी सिफ़ात और सिफ़ाती लाहिकों का इस्तेमाल बतौर इसमें तब्दील, ये भी मराठी पर फ़ारसी का एक अहम असर है. जैसे साले मज़कूर, बसात, नेक, जूतर, मेहतर, कमतरीन. मराठी में फ़ारसी के असर का सबसे दिलचस्प मज़हर इस्म और फ़ेल के साथ मराठी मज़दर की तश्कील है. जैसे खर्चने, बदलने, आजमावने, फरमावने, नवाजने. इसी तरह मराठी ज़बान में बहुत से मुरक्कब अल्फाज दोनों ज़बानों के अज्जा से मिलकर बने हैं. जैसे फ़ारसी इस्म और मराठी फ़ेल से बने हुए अल्फाज कंबर बांधने, सल्ला देने,
बाजू घेने, रद्द करने। उसी तरह से मराठी ज़बान में मुस्तमल बहुत से हरूफ जार, हरूफ अत और हरूफ निदा व फरियाद वगैरह सीधे फ़ारसी से लिए गए हैं। जैसे हरूफ जार की मिसालें आपके सामने हैं। दर, अज, बराए, तरफे, सिवाय, तहत। उसी तरह से मुरक्कब हरफ जार भी मुस्तमल हैं, जैसे दरमियान, अजराह, अजरुए, बाद अज। ऐसे ही हरूफ रब्त की मिसालें हैं, जैसे कि, चुनांचे वगैरह। उसी तरह से हरूफ निदा व फरियाद जैसे अफसोस, खूब, खूब, हाय, शाबाश फ़ारसी से लिए गए हैं। मराठी पर फ़ारसी के असरात का एक मज़हर फ़ारसी मुतल्लक़ात फ़ेल यानी एडवर्ब्स का इस्तेमाल भी है, जैसे बिल्कुल, जल्द, पैहम, नहायत। उसी तरह फ़ारसी के ये सिफ़ात कसरत से मराठी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे अव्वल, दोम, सानी, खुर्द, बुदरूब। मराठी पर फ़ारसी के असरात का एक मज़हर वो अल्फाज हैं जो मराठी इसमों और फ़ारसी लाहिक़ों से बने हैं और जो इसमें फ़ाइल का माना देते हैं, जैसे चिटनीस, गोलंदाज, गांजे का, सट्टेबाज वगैरह। कभी कभी दो हम माना अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक फ़ारसी और दूसरा मराठी होता है, जैसे चीज़ वस्त, मान मरातब, रीति रिवाज, कागज पत्र, बाजार हाट। एक और चीज़ जो मराठी पर फ़ारसी के असरात की निशानदेही करती है वो मराठी ज़रबुल अमसाल में फ़ारसी का गहरा इस्तेमाल है और ये मराठियों के दरमियान फ़ारसी की मकबूलियत की दलील भी है। ये चंद मिसालें देखें। हज़ीर तो वज़ीर, जुल्मा चा राम राम, चोरा ला मलीदा, चुकला फ़कीर, मशीदीत वगैरह। ख़ुलासा ये कि फ़ारसी ज़बान ने महाराष्ट्र और दक्कन के इलाके में अपने 350 साल के सफ़र में न सिर्फ अपनी तरक्की और फ़रोग का सुनहरी दौर देखा है, बल्कि यहाँ की ज़बानों पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि आज भी जबकि हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान का बाज़ार सर्द हो चुका है, ये असर व नफूज़ उसी तरह कायम है और इस खित्ते के लोगों की बोलचाल का हिस्सा है, जिसे मिटाना आसान नहीं। इसी के साथ हम आज की अपनी इस गुफ्तगू का अख्तिताम करते हैं। बिस्यार तशक्कुर। खुदा हाफिज़।
Good evening, friends. Myself, Dr. Zohaib Hassan, Head of the Department of History, Poona College of Arts, Science and Commerce. And today I will be speaking on the Second World War, which is the most destructive war ever to have occurred in history so far. As is the case with the World War, we all know that the war has its causes. Then there is a course in which battles and wars and all conflicts take place. And after that, we have the consequences. Okay, so one of the major causes for the outbreak of the Second World War was the lopsided and biased and partial decisions made in the Treaty of Versailles of 1919, where Germany was solely held responsible for the First World War. It was made to pay a huge war indemnity, asked to thoroughly demilitarize itself. Its coal mines in Saar region were ceded to France for nearly 15 years, and all this naturally created and fostered anger in the hearts of Germans, who now started looking for a powerful leadership which came under Adolf Hitler. He was a ruthless, yet a completely dedicated man to his cause. He started the process of elimination of his political and ideological opponents and paving the way for his swift rise. He became Chancellor in 1933. Then, finally, when Germany attacked, the League of Nations, which can be considered some kind of precursor to the United Nations, was ineffective from the beginning. USA never became its member, although it was its brainchild, while Soviet Union, which now of course is Russia, was not allowed to join, thereby rendering it moribund. The aggression of fascist powers like Italy and Japan in Ethiopia and China was completely overlooked. The policy of appeasement whereby Britain and France completely overlooked Germany's audacious actions in Czechoslovakia. So this is also one of the major causes for the outbreak of the Second World War. Finally, when Germany attacked Poland on 1st September 1939, Britain and France realized that there's no end to Hitler's ambitions, and the two countries formally declared war on Germany on 2nd September 1939. Now, this is the course of the war. So what are the important developments that took place during the war? The Axis powers, which is Germany, Italy, and Japan, began with overwhelming success. By 1940, Germany had occupied Belgium, Poland, Norway, Denmark, Netherlands, and even France. It attacked Britain in July 1940, indulged in extensive bombing, but the British were able to hold on, frustrating Hitler and forcing him to abandon his plans of invading the nation. By mid-1942, the Axis powers were at the height of their power, yet two of their doings led to their steep downfall. So first was when Japan attacked US naval base in Hawaii, Pearl Harbor. There's a famous movie also made on the same. The United States, which so far had not entered the war, now joined the war on the side of the Allies. And moreover, Germany, which initially had made gains in the USSR, now was on the retreat after Russians resorted to scorched earth policy and putting up a stubborn resistance. So what is now happening is that the USA and USSR, when they entered the war, that tide turned in favor of the Allies. So the coming of the USA and USSR on the Allied side decisively changed the course of war, and by mid-1944, Germany was facing serious reversals, and with the dropping of atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, Japan surrendered and the war was over. So now, what are the consequences? Yet, it was the most costly and destructive war in history, as I told you in the beginning. There were over 70 million fatalities, and the cost came to about a staggering 1 trillion at that time, 1 trillion US dollars. Other important consequences of the war were the emergence of USA and USSR as the new superpowers, the displacement of old colonial powers such as Britain, France, and Germany, strengthening anti-imperialist freedom movements in these countries' former colonies, which of course Africa and Asia. We all know that in India, the freedom movement got a spurt after the end of the Second World War. India became independent in 1947. Another important development was the setting up of the United Nations Organization, UNO, which was again formed in 1945 to prevent such type of conflicts in future and work towards peace and sustainable development. Yet sadly, still, this has not been achieved successfully. Thank you.
इसका किधर है, इनर्ज नहीं होगा मतलब पीपीटी ये नहीं हो रहा है सर, ये पीपीटी ये नहीं हो रहा, फुल दिखे फुल इसमें नहीं हो रहा है, किया मैंने छोटा स्लाइड शो का ऑप्शन ही इधर नहीं आ रहा है, स्लाइड शो किया मैंने स्लाइड शो पर किधर है इसको, स्लाइड शो पे करना आप ही आया हूँ Yes. Good afternoon, students. Suppose my hand is lost in accident. So can it replace or reform again? Never. Means the original hand will not reform again. But when we trim our nail and here again they reform or regrow. But in some cases, in some animals, when we see the salamander, regeneration phenomena. In the regeneration, the lost body part and the tissue, any tissue or damaged tissue again reform. So for example, if the tail of the house lizard is cut, the missing part develops again from the remaining part of the tail. Some animals have a great power of regeneration and some animal it is very poor, like human being. For example, Hydra, Planaria. In this, the small part of the small fragment of the body which going to form a complete new Hydra or the new Planaria. Our body also spontaneously loses cells from the surface of the skin and replaced by newly formed cells. This is due to regeneration. So today we are going to discuss in detail about the regeneration in animals. First of all, we see what is regeneration. The regeneration is a natural potential of living organisms to replace, renew or repair worn out, damaged or lost parts of the body, or to reconstitute the whole body from a small fragment during the post-embryonic life of an organism. Now see the feature of regeneration process. This process is varies in different animals. It is greater in lower animal and the earlier developmental stages of organism. It is very poor in mammals, restricted with nails and hairs externally, but internal regeneration found in specific organ or tissue. It is more prevalent in the plant cells. See, these are some examples of invertebrate animals in which regeneration occurs, like sponges, Hydra, Planaria, earthworm, crab,
mollusk, and the echinodermata like sea star. These are few examples of vertebrate animals having a regeneration power such as fins and tails in fish, limbs and tail in amphibians and reptiles. In the birds, regeneration is restricted at the beak. In the case of mammals, regeneration is restricted to tissue only. External parts are not regenerated. Skin and skeletal tissue possess great power of regeneration. The liver has the maximum capacity of regeneration. If the kidney is damaged or removed, the other enlarges to compensate the lost kidney. This is called as a compensatory hypertrophy. Now see the types of regeneration in animals. Broadly, it is studied under three heads: physiological, reparative, and the autotomical regeneration. First of all, see about the physiological regeneration. In this type of regeneration, a constant loss of many kinds of cells due to wear and tear caused by day-to-day activities. The replacement of these cells is known as physiological regeneration. For example, replacement of RBCs. The worn-out RBCs are deposited in the spleen and new RBCs regularly produced from the bone marrow cells, since the lifespan of RBC is only 120 days. Another example we can take as a replacement of epidermal cells of the skin. You can see in the picture, the cells from the outer layer of epidermis are regularly peeled off by wear and tear. These are constantly being replaced by new cells added by the Malpighian layer of skin. The next type of regeneration is reparative regeneration. In this type, the replacement of lost part or repair of damaged body organs. In this type, regeneration wound is repaired or closed by the expansion of the adjoining epidermis over the wound. For example, regeneration of limbs in salamanders, regeneration of lost tail in lizards, healing of wound, replacement of damaged cells. And the third type is autotomy. In some animals, like starfish, some part of the body is broken off on being threatened by a predator. This phenomenon of self-mutilation of the body is called as autotomy. For example, crabs break off their leg on approaching of the enemy. Holothurians, means sea cucumbers, throw off their internal viscera in defense mechanism, and the break of an arm in the starfish. The regeneration also having a different types on the basis of cellular mechanism. Based on cellular mechanism, regeneration can be 5 types: morpholexis, epimorphosis, heteromorphosis, super regeneration, and Wolffian regeneration. Now see morpholexis. In this type of regeneration, the parts of the new growth of the particular body part, it is due to the remodeling of existing tissue and the reestablishment of the boundaries of that tissue. Thus, in this case, the involving very little new growth. As a result, the regenerated individuals is much smaller initially, and subsequently increase their size and becomes normal after feeding. This type of regeneration is known as morpholexis. The example, regeneration of hydra from a small fragment of its body. The next type is epimorphosis. In this type of regeneration, de-differentiation is of adult structure in order to form an undifferentiated tissue. Actually, de-differentiation is one of the property of the cell during the development of the organism. Means differentiated cell, diversified cells again comes into their original form or the embryonic form as a stem cell. That is the de-differentiation. So in this case, regeneration, de-differentiation of the adult structure in order to form undifferentiated mass of cell, and they are highly proliferating and accumulate under the epidermis, which has already expanded with 2 days. Bulge transform into conical lump and is called as a regeneration bud. And from that regeneration bud, the cells continue proliferate and finally redifferentiate to form an rudiment of a limb, and the rudiment eventually transform into a normal limb. This type of regeneration is a epimorphosis. For example, limb regeneration in amphibian animals.
The third type is a heteromorphosis or a heteromorphic regeneration. In this process of different organ develops from the one that has been removed. The phenomenon is called as a heteromorphosis. For example, in shrimps, Palinurus, it is a lobster, spiny lobster. In this animal, if eye is removed from eye stalk, the new eye is regenerated. But if the eye is removed along with the optical ganglion, instead of the eye, an antenna-like organ is regenerated. This type of regeneration is exhibited by lower animals. So you can see in the picture that. The fourth type is super regeneration. In this type of development of superfluous number of organs or parts of the body, heads, tail, limbs, as a result of regeneration is known as a super regeneration. Means when we take a deep cut is made on the deep cut on the head or end of the planaria body or the earthworm. So additional head will be developed in planaria and additional segments also develop in the case of earthworm. Cuts in the middle part cause the development of both heads and tail. The fifth type of regeneration is a Wolffian regeneration. It is a special type of regeneration found in the urodales and anurans. These are the amphibians. In the Trichuris, if the lens of the eye is removed, a new lens is formed from the uninjured iris. The original lens is developed from the epidermal ectoderm, but the regenerating lens formed from the iris is neuroectodermal in origin. Thus, regeneration of the part of an organ from a tissue other than its original embryonic tissue is called as a Wolffian regeneration. The name is given after the discovery by the Wolff in 1935. So students, today we studied about the important developmental concept, that is a regeneration in animal with its different types in detail. Thank you.
ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। कौन सी है? PPT में इसमें ठीक है। ठीक ठीक वैसा कुछ नहीं है सर। एक मिनट, ठीक है सर। नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अबरार अहमद, उस्ताद उर्दू, शोबे उर्दू अरबी फ़ारसी, पूना कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है मुख्तसर अफसाना, तारीफ़ और अज्ज़ाए तरकीबी, जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी, डिफिनेशन एंड एलिमेंट्स। हमने इससे पहले कि जितने लोग हैं ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सिन्फ़ है उर्दू की, उस सिन्फ़ को किसमें, ये किस उर्दू नस्र की किस कैटेगरी में आती है, उससे जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पूरी उर्दू नस्र को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक जिसे हम कहते हैं जो अफसानवी अदब, दूसरा गैर अफसानवी अदब। अंग्रेज़ी में इसे हम फ़िक्शन राइटिंग एंड नॉन फिक्शन राइटिंग कहते हैं। तो आज जिस सिन्फ़ में हम बात कर रहे हैं वो अफसानवी अदब की एक सिन्फ़ है जिसे हम अफसाना कहते हैं। अफसानवी अदब की में कुल 5 सिन्फ़ें हैं, जैसे दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा और अफसानचा, और इन पांचों में से एक सिन्फ़ है अफसाना। तो आज हम बात करेंगे कि अफसाना क्या है और ये अपनी तमाम असनाफ से किस तरह से मुख्तलिफ है और किन बुनियादों पे हम इसे अफसाना कहते हैं। तो अफसाना वो जदीद नस्री सिन्फ़ है जिसमें किसी एक वाक़या, किसी एक हादसा, किसी एक जज्बा, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाए। इसमें वहदत तासुर हो, ईजाद व इख्तिसार हो, तख़य्युल की आमेदिश हो, अफसाना निगार का एक नुक्ते नज़र भी हो। इसको हम एक मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर नावल को एक सेब तस्वुर कर लिया जाए तो उसकी एक काश यानी उसका एक टुकड़ा जो है वो अफसाना कहलाता है। यानी अगर किसी कहानी में किसी इंसान की ज़िंदगी के तमाम नशेब फ़रात को पेश किया जाए तो वो नावल कहलाएगा, यानी वो पूरा सेब है। लेकिन अगर उस इंसान के किसी एक पहलू को मंजर आम पे लाया जाए तो वो अफसाना कहलाएगा, गोया उस सेब की एक काश। इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ दानिश्वरों ने और अदब के माहिरीन ने अपने मखसूस अंदाज में पेश की है। क्योंकि ये सिन्फ़ जो है मगरिब से आई है, इसलिए मगरबी मुफक्किरीन और उर्दू के फ़नकारों ने जिस तरह से इसकी तारीफ़ की है उसकी कुछ लोगों की मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा। एडगर एलन पो के मुताबिक मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिन्फ़ है
जिसमें जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। एक नशिस्त से उसकी मुराद ये है कि जो आधे घंटे से लेकर के 1 या 2 घंटे के अंदर पढ़ी जा सके, जो मुतासिरकुन अंदाज में लिखी हो और जिसमें वहदत तासुर और जामियत हो। मोप्सा के मुताबिक एक ऐसी कहानी जिसे हम आधे घंटे से लेकर 2 घंटों के अंदर पेश कर सकें। सैयद वकार अदीम ने अफसाने की तारीफ यूँ बयान की है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जिसमें एक ख़ास किरदार, एक ख़ास वाक़या, एक तजर्बा या किसी ख़ास तासुर की वजाहत की गई हो, ने जिसके प्लाट की तफसील इस कदर मुनज़्ज़म हो कि उसे तासुर के साथ पेश किया जा सके और ख़ूबसूरती से पेश किया जाए। डॉक्टर अबुल्लाह सिद्दीकी के मुताबिक मुख्तसर अफसाना से मुराद नस्र में एक मुख्तसर सादा किस्सा है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बेनकाब किया गया हो। मज़कूरा बाला तारीफ़ात की रोशनी में अगर हम ये देखें तो मुख्तसर अफसाने की जो तारीफ़ होती है वो ये है कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू, एक वाक़या, एक जज्बा, एक एहसास, एक ख़याल, एक तासुर, एक ज़हनी कैफियत को ईजाद व इख्तिसार के साथ कहानी की शक्ल में इस खल्लाकाना और फ़नी तरीके से बयान करना कि उसमें इत्तेहाद तासुर पैदा हो जाए जो पढ़ने वाले के जज्बात व एहसासात पर असर अंदाज हो, अफसाना कहलाता है। अफसाने के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो आपके सामने हैं। मौजू यानी थीम, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और आपके उसलूब, फ़ज़ा, माहौल और तकनीक, ये 8 उसके अज्जाए तरकीबी हैं और वहदत तासुर 9। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि किसी भी कहानी को या किसी अफसाने को लिखने के लिए इन 9 जो अज्जा हैं उसको ध्यान में रखना होता है। अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो वो एक अच्छा अफसाना या अच्छी कहानी नहीं हो सकती है। सबसे पहला जो इसका जुज़ है वो मौजू है, यानी जिसे अफसाना निगार उजागर करने के लिए किसी एक नुक्ते पर अपनी निगाह को मरकूज़ करता है। ये एक मुश्किल मरहला है, इसके लिए अमीक मुशाहिदा, वसी मुताले की ज़रूरत होती है, तभी अफसाना निगार जो है मौजू पर उबूर रखते हुए कहानी के ताने बाने को बुन सकता है, प्लाट को बाकायदी से तरतीब दे सकता है और उसके वसीले से एक अच्छा उन्वान कायम कर सकता है। नंबर 2 उसका प्लॉट है। ये प्लॉट जो है अफसाने का एक सबसे अहम जुज़ है। ये अफसाने की रीढ़ की हड्डी के मानिंद होता है। पूरी कहानी इसी पे मुनहसिर होती है। अगर प्लॉट मरबूत और मुनज़्ज़म ना हो तो कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है या अच्छी नहीं हो सकती है। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट दरअसल किसी कहानी के वाक़यात को एक दूसरे से मरबूत करके मुनज़्ज़म तरीके से पेश करने को कहते हैं। और इसको एक मिसाल से समझा जा सकता है कि कहानी और प्लॉट में फ़र्क क्या है। E.M. फास्टर ने कहानी और प्लॉट के फ़र्क को वाज़े करते हुए लिखा है कि मिसाल के तौर पर कि एक राजा था, एक रानी थी, पहले राजा का इंतकाल हुआ, बाद में रानी का इंतकाल हुआ। ये एक कहानी है। लेकिन अगर इसी बात को हम यूँ पेश करें कि और इसको एक मंतकी रब्त के ज़रिए से जोड़ दें तो ये प्लॉट हो जाएगा। यानी एक राजा था, उसकी एक रानी थी, राजा का इंतकाल हुआ और राजा के इंतकाल के सदमे से रानी का इंतकाल होगा। ये एक प्लॉट है, यानी एक वाक़यात दूसरे वाक़यात से बिल्कुल मरबूत हैं और इस एक कहानी से हम कई प्लॉट तैयार कर सकते हैं। प्लॉट की भी कई किस्में हैं, सादा प्लॉट, पेचीदा प्लॉट, गैर मुनज़्ज़म प्लॉट, मुनज़्ज़म प्लॉट, ये प्लॉट की किस्में हैं। नंबर 2 किरदार, कैरेक्टर जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। किसी कहानी को लिखने के लिए ये भी बहुत अहम होता है और ज़रूरी भी है। अगर किरदार ही कहानी में नहीं होंगे तो फिर जो कहानीकार है या अफसाना निगार है वो अपनी बात को क़ारीन तक या पढ़ने वाले तक पहुंचा नहीं सकता है। यानी अशख़ास किस्सा के ज़रिए ही हम अपनी कहानी को पेश करते हैं। किरदार अफसाने का मजबूत तरीन जुज़ है। नाक़िदीन फ़न ने इसे अफसाने में सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। बगैर किरदार के अफसाने की तश्कील मुश्किल है। जिन अफसानों में नबातात या हैवानात हीरो की शक्ल में होते हैं उनमें भी उनको इंसानों की तरह बोलते, सोचते, समझते और अमल करते दिखाया जाता है। किरदार की 2 किस्में हैं, एक रुखे जामिद यानी फ्लैट किरदार, पहलूदार यानी फ़ाआल मुतहर्रिक किरदार। नंबर 3 उसका जो अहम जुज़ है वो मुकालमा है यानी डायलॉग। किसी भी कहानी में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत होती है। बगैर डायलॉग के हम अपनी बात को
आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। किरदार को नुमाया करने उभारने में मुकालमे बेहद अहमियत रखते हैं, क्योंकि मुकालमों के ज़रिए से ही इंसान की सीरत और शख्सियत सामने आती है, और किरदारों के हुस्न कुब का अंदाज़ा उसके अमल के साथ साथ उसके मुकालमे से होता है। मुकालमे के बाद जो उसका एक अहम जुज़ है वो उसलूब यानी स्टाइल है। उसलूब दरअसल किसी अदीब का वो मुनफरिद लबो लहजा या मखसूस जो फ़नकाराना तरीका है जिसकी मदद से वो अपने ख़यालात और एहसासात को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करता है, और साथ ही वो अपनी नुदत अदा और तर्ज सुखन से कारी को महजूज़ करता है। अगर इस तर्ज अदा में इनफरादियत को वाज़े करता है। मैं इसको मिसालों के ज़रिए से वाज़े करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको अदबी ज़ौक़ है और आप किसी शायर या अदीब के कलाम को पढ़ते हैं तो आप फ़ौरन ये बता देते हैं कि ये शेर या ये तहरीर फ़लाँ शख्स की है। वो ये आप इस वजह से कहते हैं कि आप उसके उसलूब को जानते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खूब बेदार हो जाएं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इन अशार को पढ़ने के बाद आपकी ज़ुबान से फ़ौरन ये निकलता है कि ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं। लेकिन जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, या ये शेर की हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो आप कहते हैं कि ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। तो इन दोनों अशार में जो फ़र्क है वो उनके उसलूब का, अंदाज़े बयान का है। इसी तरह से नसरी तहरीरों में भी होता है। जब आप मीर अम्मन की तहरीर पढ़ते हैं, जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, जब आप मंटू को पढ़ते हैं, जब आप राजेंद्र सिंह बेदी की तहरीरों को पढ़ते हैं, तो ये वादे फ़र्क आप महसूस करते हैं और आप ये कहते हैं कि ये जो अंदाज़े बयान है वो मंटू का है या इस्मत का है। तो इसी तरीके से उसलूब जो है किसी अदीब या शायर की पहचान होता है। उसकी भी कई किस्में हैं, बयानिया उसलूब, कुरानी उसलूब, दास्तानी उसलूब, मुरासलाती उसलूब, सवानी उसलूब, अलामती उसलूब, हकायती उसलूब, ये सारी चीज़ें हैं। और वक्त की किल्लत के बाइस मैं अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और बाकी जो उसके जुज़ हैं इंशाअल्लाह उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। शुक्रिया। बस ठीक है, दिख रहा है। स्क्रीन शो करा।
ऑडियो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सर? मैंने किया है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक मिनट। झुकना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ठीक है। यस, या ठीक है सर। अभी बड़ा हो रहा शायद। Yes. Hello friends, myself Dr. Shoaib Ahmed, Department of Zoology, Poona College of Arts, Science and Commerce. Today we are going to explore structure of neuron. Actually, neurons are fundamental building blocks of the nervous system that is responsible for transmitting and processing informations. Neuron is made up of two main parts: anterior cellular, that is called soma or cell body, and posterior elongated axon. Soma contains the nucleus, which houses the genetic material, that is DNA, of the cell. There are numerous branching extensions extending from the cell body, that is called as dendrites. Dendrites receive incoming signals and transmit them towards the cell body. Dendrites play a crucial role in gathering informations from other neurons. Axon is a long, slender projection extending from the cell body. It carries electrical impulses away from the cell body towards other neurons or target organs. Axon is covered by myelin sheath. Axon is covered with myelin sheath that insulate axon. Myelin sheath speed up the transmission of nerve impulses along the axon. Myelin is produced by specialized glial cells known as oligodendrocytes and oligodendrocytes in the central nervous system, while in peripheral nervous system it is lined by the Schwann cells. At the end of axon, there are small branches called as axon terminals. Axon terminals contain synaptic vesicles filled with neurotransmitters. When an action potential reaches the axon terminal, neurotransmitters are released into synapse to communicate with the other neurons. There is a small gap or junction between the axon terminal of one neuron and the dendrites of a cell body of another neuron, which is called synapse. Neurons communicate with each other at synapse through the release and reception of neurotransmitters. This communication allows information to be transmitted from one neuron to another. So, in conclusion, we can say neurons are complex cells which are with specialized structures that enable them to transmit and process information in the nervous system. Thank you.
पेन ड्राइव से लगाओ यार उसको डेस्कटॉप पेन ड्राइव से डायरेक्ट चालू करो। क्या लाइए? मुस्कुराहट लाइए। आप पूना कॉलेज में हैं। हाँ थोड़ा नीचे लो। घूम रहा है सब। एसी बंद बंद है क्या यार? वो एसी चालू कर। अरे इसका बहुत गर्म हो रहा। पसीना छूट जाएगा मेरा। सही पसीना छूटेगा। फैन चालू करना होगा। फैन चालू कर सकते हैं ना? पसीना छूट जाएगा मेरे को। बस 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 और नीचे। ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है और नीचे आवाज आएगा क्या? यहाँ पर ऐसे तो मुझे स्लाइड चेंज होगी तो यहाँ या वहाँ देखना है? लेकिन स्लाइड भी तो चेंज करनी है। अच्छा ठीक है समझ गया मैं। तीन बार करूँगा मैं सिर्फ। बस ठीक। स्टार्ट। पसीना छूटने वाला है मेरे को। रेडी? Hi everyone. Today we are going to discuss very important part of the Indian Constitution, that is fundamental rights.
prior to taking off this flight, let's understand what are the fundamental rights. Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, and place of birth. These are equal to freedoms, and these rights are essential for personal good and the society at large. A constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. The constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. Today, we shall study fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the 6 fundamental rights and also mentions the limits on these rights. Fundamental rights are a set of basic rights and freedoms that are enshrined in the constitution of many countries, including India. In the Indian Constitution, the fundamental rights are specifically outlined in Part 3 from Article 12 to 35. These rights are considered fundamental because they are essential for the well-being, dignity, and protection of individuals, and are often seen as the foundation of a just and democratic society. Fundamental rights are the claims of the people. Constitution of the country ensures the entitlement of the fundamental rights. Violation of these rights can be challenged through legal means, and independent judiciaries in many democratic countries play a vital role in upholding and interpreting these rights. During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights and demanded that the British ruler should respect rights of the people. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specifically protected and called them fundamental rights. The fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. The framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. Fundamental rights are considered as a Magna Carta of India. Magna Carta is the charter of rights issued by the King John of England in 1215 under pressure from the barons. This is the first written document relating to the fundamental rights of the citizens. Friends, to get through knowledge of the 6 fundamental rights incorporated in Indian Constitution, we must know the features of the fundamental rights. First significant feature of fundamental rights is it contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. Yes, fundamental rights are justiciable, which means that individuals have the legal right to enforce and seek remedies for the violations of these rights through the judicial system. In many democratic countries, the constitution of legal framework explicitly provides mechanisms for citizens to approach the courts when their fundamental rights are infringed upon by the government or any other entity. In Indian Constitution, Article 32 provides an opportunity to every person to approach to the Supreme Court to seek justice against the violation of their fundamental rights, wherein Article 226 empowers the High Court to investigate the fundamental rights violations. Second, the fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all the persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, and larger public interest and unity of the nation. Third, the fundamental rights are meant for the idea of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at establishing a government of laws and not of men. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. Fundamental rights are named
So because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land, they are fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development of the individuals. Some of them are very available only to the citizens, while others are available to all persons, whether citizens, foreigner, or legal persons like corporations and companies. They are not sacrosanct or permanent. The parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. They can be suspended during the operation of a national emergency, except the rights guaranteed by the Articles 20 and 21. Further, the 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression, and not on the ground of armed rebellion. Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and analog services can be restricted or abrogated by the parliament. Their application can be restricted while martial law is in force in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances to restore order. So these are the important features of the fundamental rights incorporated in the Indian Constitution. Thank you so much. थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मेरे में। हाइट ज़्यादा है, फाइट भी ज़्यादा है। सर उसको थोड़ा सा हाँ फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बस बस हो गया सर। हाँ नहीं थोड़ा बड़ा करो बस, लेकिन थोड़ा सा उसका ये स्पेसिंग हाँ बस बस फॉन्ट से बस हो गया। हाँ यस यस अभी नहीं सर अभी नहीं सेव करो सेव करो सेव करो। कितने लोग हैं हाथ उठाओ। अब्दुल सर हाँ ना क्या सोच रहे हैं। कुमार सर स्क्रिप्ट किसकी है? स्क्रिप्ट पीपीटी की स्क्रिप्ट है। वैसा थोड़ी चलता है ना, ऐसा करने का रहता तो पीपीटी में स्क्रिप्ट कोई नहीं ना
काय करायचं? 2 मिनिटं मी इथून हे ऑप्शन बंद करतो. जोडा. हा बरोबर. आपकी पीपीटी है ना? चलो मैडम. कंसेप्ट ऑफ कौन सा आपके पीपीटी? एसएम पीडीएफ प्रेजेंटेशन. ग्रुपवर टाकलंय मी हे. तीच घेतली. पीडीएफ है मैडम ये. पीडीएफ है. तुम्हाला काय करावं लागेल? असं 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 बोटाने वर वर सरकावं लागेल. पण आता स्क्रिप्ट हा येस अशा पद्धतीने काय पुढे पुढे सरकव. 2च मिनिटाचं आहे माझं जास्त. लगा दिए सर. सर हो गया क्या? मेरा पहले कर दूं. हाँ नहीं हो गया. ये नेक्स्ट नाही हाताने करू. स्टार्ट. दीपिका नहीं नहीं मिसेस दीपिका DEEPIK. किनिंगे KINING. हाँ बरोबर. यस यस. यस नहीं स्टार्ट इथून स्टार्ट करेल. हाँ. हेलो एवरीवन. Dear students, hello everyone. Dear students, we are going to start to contribution of Henry Fayol, the father of management. Henry Fayol, he born in Istanbul, 29 July 1841, Paris. He is a French mining engineer and director of mines who developed a general theory of business administration
that is often called faiolism. He and his colleague developed this theory independently of scientific management, but roughly contemporarily. Like this, F.W. Taylor, he is also widely known as a founder of modern management method. Fayol was born in 1984. He contributed to the management. His Fayolism is known as a functions of management. Fayol's work was one of the first comprehensive statement of general theory of management. He proposed that there were 5 primary functions of management and 14 principles of management. Functions of management: to planning, to organize, to staffing, to command or direct, to coordinate, and to control. Dear students, now we are going to see the 14 principles of management. The first principle, division of work. Work should be divided among individuals and groups to ensure that efforts and attentions are focused on special portions of the task. Fayol presented work specialization as the best way to use the human resource of the organization. Second principle of management, authority. The concept of authority and responsibility are closely related. Authority was defined by Fayol as the right to give order and the power to exact obedience. Responsibility involves being accountable and is therefore naturally associated with authority. Whoever assumes authority also assumes responsibility. Discipline. It is the third function of third principle of management. A successful organization requires the common effort of workers. Penalties should be applied judiciously to encourage this common effort. Unity of command. This is the next principle of management. Workers should receive order from only one manager. Unity of direction. The entire organization should be moving toward a common objective in a common direction. Subordination of individual interests to the general interest. It is the next principle of management. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. Remuneration. Many variables such as the cost of living, supply of qualified personnel, general business condition, and success of the business should be considered in determining our rate of pay. So remuneration is the best principle of management. Centralization. Fayol defined centralization as a lowering the importance of the subordinate role. Decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depend on the specific organization in which the manager is working. Next, scalar chain. Manager in a hierarchy are a part of chain like authority scale. Each manager from the first line supervisor to the president possess certain amount of authority. The president possesses the most authority, the first line supervisor the least, and lower level manager should always keep upper level manager informed of their worker activity. The existence of scalar chain and adherence to it are necessary if the organization to be successful. Next, order. For the sake of efficiency and coordination, all materials and people related to specific kind of work should be treated as equally as possible. Equity. All employees should be treated as equally as possible. Stability of tenure of personnel. Retaining productive employees should always be a high priority of management. Recruitment and selection costs as well as increased product reject rates are usually associated with hiring new workers. Initiative. Management should take steps to encourage worker initiative, which is defined as a new or additional work activity undertaken through self-direction. Spirit the corps. This is the last principle of management. Management should encourage harmony and general good feeling among employees. Thank you to one and all.
सिंक कलेक्शन सेम असतो तुम्ही नवीन सिंक कलेक्शन मध्ये आता आपण म्हणतोय LCS नावाने हा सेल नवीन जीवन घेऊ आपण त्यावेळेस नवीन नाव द्यायचं तो नवीन नावाने काय व्हायचं VFX खाली ते त्या नावाने केलं हे आता सिंक कलेक्शन मध्ये काम सुरू करण्यापूर्वी घेऊ म्हणायचं नवीन नाव द्यायचं हाँ सेफ सर स्टैंडिंग पोजीशन बरोबर हाँ शेक SHAIKH Yes. Okay. Hello dear students. Today we are going to see a topic from chapter number 1, that is Kingdom Protista, and today we'll see a last bit from this topic, that is reproduction in paramecium. So far what we have seen is, as we know that paramecium is a unicellular ciliated protozoan. So I think reproduction, like we might be interested like how this single celled organism reproduce. As we all aware of that about the reproduction, which is one of the quality of a living organism. So reproduction in a simple layman's language is nothing but the production of a offspring. If we look at in case of paramecium, this reproduction takes place by two ways. One is asexual method and another is sexual method. Paramecium reproduces asexually by binary fission and sexually by conjugation. So we'll move on to the details. Binary fission. As the name itself suggests that binary fission, meaning a single cell organism is broken down into two. That is what we call it as a binary fission. In case of paramecium, if you look at transverse binary fission is taking place. What do you mean by transverse binary fission? Transverse binary fission is basically division of an unicellular organism which is taking place at the right angle to the longitudinal axis of the body. And this type of binary fission is called as transverse binary fission. In case of ciliates, another kind of binary fission is also observed, and we call it as a longitudinal kind of binary fission, which is observed in case of euglena. So we restrict our discussion only to the paramecium, where the binary fission is taking place in a transverse manner. So let's move on to the how binary fission actually takes place in case of paramecium. So whenever paramecium undergoes binary fission, first it stops feeding and its oral groove starts disappearing. It's quite logical. If organism is stop feeding, then there is no need of an oral groove, which is basically a feeding apparatus. So first of all, the first event what occur is the oral groove disappears. Secondly,
macronucleus, which is the larger nucleus present in case of ciliate, it divides by a mitosis, and micronucleus, it divides by mitosis. So remember, there are two types of nuclei, and these two nuclei, they divide in a two different ways. One is amitosis, second is mitosis. We know that in case of mitosis, there is a equational division and the equal division is taking place. Whereas in case of amitosis, division is not equal. So that is what these two nuclei basically divide in case of binary fission, amitotically and mitotically respectively. After the division, these two nuclei, they move towards the opposite pole, and the same thing you can observe in diagram also. The nuclear division is taking place, and these two nuclei, they are moving towards the opposite end. At the same time, when this nuclear division is going on, the constriction is develops at the middle part of the body, and this constriction divides the cytoplasm into two equal parts, and this event of division of cytoplasm is called as cytokinesis. So in this way, two daughter paramecium are produced. So daughter from the anterior end is called as proter, while the another daughter which is from the posterior end is called opist. I think in earlier lecture you might be aware of that. In case of paramecium, the rounded end is called as the anterior end and the conical end is called as the posterior end. So when transverse binary fission is taking place and organism is getting divided into two, the anterior individual is called as proter and the posterior individual is called as opist. So both the proter and opist are of equal size, and they contain a complete set of cell organelle as they are in the parents. So oral groove, once the division is completed and from the one parent, when two daughters are produced, oral groove and cytopharynx, which are newly formed in both the daughter. Now it is also very logical that now whatever the daughter has been produced, they needs to grow, and for growing purpose they needs to feed. So for feeding purpose, they must have a feeding apparatus, and this feeding apparatus is present in the form of a oral groove and cytopharynx. So that is why in the daughter cell or in the daughter individual which are produced after the binary fission, they starts developing new oral groove and cytopharynx. One contractile vacuole they receives from their parent. So one goes to the proter and another goes to the opist, and other two are newly formed because in each individual they have received one contractile vacuole from their parent, and another one is newly synthesized in both the parents. If you look at overall, like for this entire process, it took place in 2 hours, and in a day it takes place almost 1 to 4 times. The most important thing about the binary fission is that it is a kind of asexual reproduction because there is no involvement of gamete, and simply the parent body is getting divided into two. And this kind of asexual mode of reproduction only occurs when the favorable conditions are there. Favorable condition basically includes plenty of food, favorable temperature, all the environmental conditions suitable for the organism. Only in only such favorable condition or only such conducive conditions the binary fission takes place. After repeated binary fission, what happens? Paramecium lost its vigor. Due to repeated binary fission, now the paramecium unable to perform or unable to discharge its physiological activity more vigorously. So after multiple rounds of binary fission, paramecium performs conjugation, which is a sexual kind of and this conjugation really helps rejuvenate lost vigor and to discharge the physiological activity more vigorously. So this conjugation will continue in the next lecture. Thank you so much.
स्क्रोल करायचं असं केलं तर सर फक्त ग्रीन स्क्रीन सर फक्त ग्रीन केसांच्या मागून टाकू का? ठीक है. हे दिसतंय का नीट पण? फुगा वगैरे नाही ना दिसत. अटकल्यासारखंच वाटतंय मला पण करता वर आलं. वाटतंय हे मागेच टाकू का?
Sharif, and I will be walking you through the power of first impression, how you can make a first impression and how it impacts your personal experience with the person you meet for the first time. We know we never get a second chance to make a first impression, right? So let's quickly do a warming up exercise. What is it that what is your first impression about the person that you see on the screen? Is he a doctor? Is he experienced, inexperienced? You can tell by he looks bald, so yes, he's an experienced man. He's wearing a lab coat, so maybe he's a doctor. Can you trust the person? Doctors we usually trust, so yes. What do you think about him? Can you really trust him? What if I tell you he's a thug? It is the same man, just dressed differently, and the impression you had about him was he was a doctor, and you really wanted to trust him. You wanted to believe in him. Some quick statistics on first impression. During the face-to-face meeting, 93% of people's judgments of others are based on the non-verbal inputs like your body language. Your first impressions are formed within the first 7 to 17 seconds of meeting someone. In a survey of 2,000 managers, 33% claimed to know whether or not they would hire someone within the first 90 seconds. That's barely a minute and a half. In a study, researchers identified 5,000 distinct hand gestures in humans, and 38% of the person's first impression is determined by the tone of his voice or her voice. How are the first impressions formed? As you can see in the pie chart in front of you, 55% the way you dress, act, and walk through the door impacts your first impression, 55%. The quality of your voice, the grammar, and your confidence impacts 38%. And 7% is the words you choose to use. Types of body language and what they mean. Positive, open body language. The female that you see on the screen, we can see that she's displaying positive and open body language, whereas the male that you see on the screen is displaying negative or closed body language. You can see he's squinting, his head is lowered, he's blinking too much, his arms are crossed, he's shaking, if you're moving your leg too often. All these are signs or ways to express your body, to express that you are having a negative or a closed body language. In comparison, the female on the left, she's got arched eyebrows, that shows attentiveness, direct eye contact, arms are akimbo, they are fixed, mirroring, feet facing directly towards the person, not facing away from the person, unlike the man in the picture. Some common non-verbal mistakes made during an interview. 26% of the people who interact with other people during the first meeting, the handshake is poor. And if you have a poor handshake, you really cannot have a good impression on the person you're meeting. 21% of the people close their arms over the chest. 33% of people fidget too much. They move their hands too much. They set their hair. They keep moving here and there. They fidget too much. 21% of the people play with their hair or touch their face. 67% fail to make eye contact. We must have seen a lot of times when we go to somebody who's elder to us or who's an authority, we try not to have an eye contact. That shows that we are lacking the confidence to face them. 38% don't smile. 33% have a bad posture. And 9% use too many hand gestures. Now let's quickly look at some of the attires that we can use. Casuals, snappy casuals, business casuals, business-like, semi-formals, and formals. I'll give you a glimpse of what casual looks like. These are casual attires, which we normally wear after 5, I would call them. The snappy casuals. Business casuals. So here you're mixing casual and business both together. So neither are you in a proper formal attire, neither are you in a complete casual attire. So business casuals. Business professionals. Semi-formals. He's wearing a blazer over a t-shirt and a trouser or a jeans. Formals.
Some do's and don'ts for a new job. Ensure that you're keep an we feel interviewers to ask you questions. Be all. Don't be. Put down your former employer. Don't down your former employer whenever you particular job and go to a new job. Ensure that you don't speak bad about the previous employer. What experience you had, that's yourself. Do not get in office. Do not be step and walk over and demanding. And tips to give a before to that the impression of your hand speak with your to match the other person. If you have any questions, you can write on the comments below and ask me your questions, and I will be happy to answer them. Thank you so much. नेक्स्ट पे नहीं कर सकता नेक्स्ट नहीं कर सकता नेक्स्ट पे नहीं कर सकता हाँ ठीक
कानात अडकतो हा इथे हे इथे. Objective of this SASM are increase demand for early diagnosis and treatment in patient, combat stigma and discrimination, improve support by community for case referral and case holding, increase capacity of health workers to deliver ACSM messages, and mobilizing political commitment and resources for TB. So the SASM planning is for all state level in at national level as well as state level and district level. At state level, STO district state TB officer with support for state IEC SASM officer the state annual action plan, and DTO district TB officer is
you have to read that. ठीक है? आपका नाम नहीं डालते इधर? डालूं? आपको उसे आगे पीछे करेंगे मैडम। हाँ। ये आगे पीछे ये। नाम बोलो। डॉक्टर अच्छा मेहनत किए डॉक्टर के लिए। सबसे ज़्यादा पेड़ में मैडम लिखना है मालूम है? हमको नहीं दी है ना, इसलिए हमको याद नहीं रहा। अच्छा हाँ। 3 दिन तक ये पेड़ ही बांट रहे छुट्टी पे जाना है। मामा सर आपको वो भी मेरा है ना मेरा हाँ। आप किस में बोल रहे हो? डिपार्टमेंट हमारे बीबी हम घुसपैठी कर रहे हैं। असिस्ट 10 हाँ बराबर है। ये you wanted another font size या कुछ? हाँ यहाँ देखो बराबर सेंटर में है। अब स्टार्ट हाँ देख लो स्लाइड शो पूरा करके थोड़ा आगे इसको बड़ा करना है ना? देखो दिख रहा है ओके यस नेक्स्ट देखो Ladies and gentlemen, a very good afternoon to one and all. Yes. Dr. Hina Sayyed. Dr. Hina Sayyed. हेलो सर आवाज आता है Good evening to one and all. I, Dr. Hina Sayyed, Assistant Professor from Department of BBA, Poona College of Arts, Science and Commerce, welcome you all. Today's my PPT is on Introduction to Human Resource Management. Introduction to Human Resource Management
Importance of human resource management and functions of human resource management are the content of my today's PPT. Introduction to Human Resource Management. HRM is concerned with the human being in an organization. The management of man is a very important and challenging job because of the dynamic nature of people. No two people are similar in their mental ability, sentiments, and behavior. They differ widely also as a group and are subject to many varied influences. People are responsive, they feel, think, and act. Therefore, they cannot be operated like a machine or shifted and altered like templates in a room layout. They therefore need a handling by management personnel. Importance of human resource management. HRM helps the organization to attain its objective effectively and efficiently by providing competent and motivated employees, to utilize the available human resource effectively, to develop and increase to the fullest of the employee's job satisfaction and job self-actualization, to develop and maintain the quality of work life, which makes the employment in the organization a desirable personal and social situation, to help maintain ethical policies and behavior inside and outside the organization, to help and maintain cordial relations between employees and management. Functions of human resource management are human resource planning, designing of the organization's job, selection and staffing, training and development, organizational development, compensates employees, assistance, union or labor relation, personal research and information system. Function of management, at a glance you can say it's a managerial functions of HRM and operative functions of HRM. Managerial functions of HRM are planning, organizing, directing, controlling. Operative functions of human resource are procurement, development of HRM, motivation and compensation, maintaining the functions of HRM. Here in detail we can see in our next PPT. For this, I will stop here. Thank you. ते ऍडव्हान्स सेटिंग आहे म्हणजे स्किन टोन जो आहे एकदम प्रोफेशनल लेवल पीपीटी बोल के ये वाला नीचे 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 वाला
ओके सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर बाबा शेख, हिंदी विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, कैंप पुणे। छात्रों हो, आज का जो हमारा विषय है प्रेमचंद की जो आत्मकथा है मेरा जीवन। तो इस आत्मकथा में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आत्मकथा किसे कहेंगे। अनेक विद्वानों ने आत्मकथा के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं की है। तो अंग्रेजी में इसके लिए ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो आप आत्मकथा की परिभाषा में हम साहित्य की अन्य विधाओं की तरह ही आत्मकथा भी एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें रचनाकार आत्मावलोकन करते हुए स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन का स्वयं किया गया विवेचन आत्मकथा एक लेखक विश्लेषण है जो भोगा हुआ यथार्थ है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार उन्होंने आत्मकथा लेखन की वह विधा के बारे में कहा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मपरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्तापित करता है। गोविंद त्रिगुणायत के ने अपने आत्मकथा के बारे में इस तरह परिभाषा की है। आत्मकथा लेखक की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। मेरा जीवन ए प्रेमचंद ने जो खुद का स्वयं भोगा हुआ जो यथार्थ है उनको यहाँ पे प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयास किया है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद को उपनाम से नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद से भी जाना जाता था। उपन्यास के क्षेत्र में उनका कार्य देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यास सम्राट शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि उनको दी है। उन्होंने आरंभ में उर्दू और फारसी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जीवन यापन करने के लिए उन्होंने हिंदी अध्ययन और अध्यापन किया और उसका ही शौक उन्हें बचपन से शुरू हुआ। जीवन संबंधी अनुभूति की वाणी लेखक ने स्वयं अपनी साहित्यिक, सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थिति का लेखा-जोखा जनमानस के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आत्मकथा के माध्यम से मध्यवर्गीय कृषक परिवार का उन्होंने चित्रण किया है। जीवन अभाव से परिपूर्ण जीवन आत्मकथा में दिखाई देता है। पिता उनके पोस्ट में क्लर्क थे, हर माह 20 रुपए कमाते थे और पिता के असामयिक मृत्यु के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। विमाता की दो संतान, उनका भी लालन पालन करना प्रेमचंद जी की जिम्मेदारी बन गई। प्रेमचंद का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया। गांव से शहर 12 मील दूर पैदल चलना, जीवन अभाव से परिपूर्ण भरा उनका जीवन था। अनेक समस्याएं सामने खड़ी हुई थी। इसलिए प्रेमचंद जी अपने पारिवारिक एवं निजी जीवन की परिस्थिति के बारे में कहते हैं, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो है, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियां और खंडहरों का स्थान नहीं है। उपरोक्त वाक्य से पता चलता है कि उनके जीवन में उत्पन्न सुख, पीड़ा, निराशा का प्रतीक है। लेखक का कहना है उनका जीवन सपाट समतल नहीं तो उनका जीवन की राह में उत्पन्न टीलों, गड्ढों से भरा पड़ा है। उन्हें अपने जीवन में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में सुख, समाधान, धन, पैसा, आराम आदि बातों का कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई करना उनके नसीब में नहीं था। अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूरा ना कर पाए। मन की इच्छा थी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन वह बातें हमें खूबसूरत महसूस हुई। प्रेमचंद की शिक्षा संबंधी अनुभव हैं। प्रेमचंद जी मैट्रिक 2nd डिवीजन में पास हुए। अच्छे क्वींस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इसी निराशा से बेचैन प्रिंसिपल मिस्टर रिचर्डसन उनके घर पहुंचे, मगर कॉलेज में मिलने के लिए कहा।
ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की समिति पर थे। उनकी सिफारिशों के कारण एडमिशन का पत्र उन्हें मिला था, मगर किस्मत के मारे घर जाते ही तेज बुखार। 15 दिन घर में आराम किया। नीम की हरी पत्तियां का काढ़ा पी पी कर परेशान। कॉलेज पहुंचने के बाद बुखार से नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ी बीमार पल्पिटेशन ऑफ हार्ट की बताया। उस पर प्रिंसिपल ने सभी को योग्यता की जांच की जाए इस तरह लिख दिया। और लेखक अंग्रेजी विषय अच्छा था, लेकिन गणित और रेखा गणित पर उनका भरोसा नहीं था। अंग्रेजी में उन्हें संतोषजनक मार्क मिले, लेकिन गणित और अन्य विषय में और असंतोषजनक लिखा गया। लेखक हरे किस्मत के मारे जहां भी जाते असफल होते, किसी की सहायता नहीं मिली, और जहां सहयोग मिला उन्हें वो रास नहीं आया। इस तरह उनके शिक्षा संबंधी बड़े कटु अनुभव आए। सोजे वतन संबंधी कार्रवाई यानी देश में स्वदेश प्रेम की महिमा गाने वाली प्रेमचंद जी की देशी भक्त हिंदुस्तान पर विदेशी शासन का प्रबंध था। उस समय लेखक प्रेमचंद जी ने कहानियां उपन्यास लिखना आरंभ किया था, तब उन्हें कुछ कठोर अनुभव आए। 1908 में उन्होंने सोजे वतन कहानियां संग्रह उर्दू में छपा। वे नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उस समय बंग आंदोलन चल रहा था। इसी 5 कहानियों में देश प्रेम की महिमा का वर्णन था। सोजे वतन में राष्ट्रीय भावना से पूर्ण होने के कारण सोजे वतन को जब्त कर लिया गया, लगभग 700 प्रतियां, जबकि नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का बहुत बड़ा कार्य प्रेमचंद जी ने किया, लेकिन अंग्रेजों को यह काम खल रहा था। उस समय लेखक शिक्षा विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे। सोजे वतन छपकर 6 माह हो चुके थे। जिलाधीश का परवाना लेखक के नाम आया। सोजे वतन लिखकर सरकार का अपमान करना प्रेमचंद के ऊपर आरोप लग गया। कलेक्टर के साथ एक समिति गठित की गई। पहचान की समिति का गठन हो। समिति में ही निष्कर्ष निकला, लेखक केवल कलम से लिखा है, राजनीति से प्रेमचंद का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें फिर से इस तरह की हरकत करने से मना कर दिया और छोड़ दिया और धमकी दी गई। इसी तरह प्रेमचंद जी का जो जीवन है एक कठिन संघर्ष के साथ गुजरा। इसी तरह उनके आत्मकथा में उन्होंने अपने लिखा है। धन्यवाद। तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इट्स अ मिरर। इंटरनल चल रहा है अभी लाइव जाने के लिए अभी इनका एक रिकॉर्डिंग कर लेगा। एक रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग वोट ऑफ साइंस का रिकॉर्डिंग कर लो। सर थोड़ा सा थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, है ना? तो स्पाइक दिया था सर के पास पेन है। से बोल देते हैं।
सर्टिफिकेट तो वहीं देंगे ना। कहाँ पे सर इसमें? VOT। ये वोट ऑफ थैंक्स रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी वोट ऑफ थैंक्स दे नहीं रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में आपके हवाले कर दिया जाएगा। Is it all right? सर थोड़ी सी स्क्रीन टेढ़ी हो रही है और ऊपर जा रही है। स्क्रीन टेढ़ी लग रही है। थोड़ा सा थोड़ा मैं इस तरफ हाँ नहीं स्क्रीन थोड़ी थोड़ा ऊपर करो सर, ऊपर ये ऊपर से ऊपर, हाँ थोड़ा सा ऊपर। ठीक है सर चलिए। विश में लक। It's too hot. HAMMAD. HAMMAD. ZUBER. That's it. Yes, sir. I begin in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Eminent resource persons of the FDP, Shri Bhushan Kulkarni and Shri Eknath Kore.
respected Principal Dr. Aftab Anwar Sheikh, Vice Principal Professor Moinuddin Khan, and Professor Iqbal Sheikh, Vice Chairman Library Advisory Committee Professor Irfan Sheikh, all the participants from Pune city, from all over Maharashtra and from all over India who have participated in online mode, members of college teaching staff and dear friends. A very good evening to all of you. It is indeed my privilege to propose a vote of thanks. At the very outset, we all must be thankful to our Supreme Creator for kindling the noble intention of organizing, attending this FDP in our hearts. We take this opportunity to thank our college management, Yatim Khana and Madrasa Anjuman Khairul Islam, Mumbai, for very graciously sponsoring this FDP. We express our deep sense of gratitude to our resource persons, Shri Bhushan Kulkarni, Shri Eknath Kore, and their team, including Mr. Vikas Ingle, who have given such sparkling presentations. I am falling short of words to express my emotions. In a nutshell, as per my personal assessment, they have created history. We are highly in debt to our principal, Dr. Aftab Anwar Sheikh, Vice Principal and IQAC Coordinator, Professor Iqbal Sheikh, Vice Principal, Professor Moinuddin Khan, Vice Chairman of the Library Advisory Committee, Professor Irfan Sheikh, for their support and guidance, without which this event would not have been possible. We express our gratefulness to all the members of the Library Advisory Committee and the subcommittees who gave us support for organizing this event. Thank you, dear colleagues. I thank all my department colleagues of library for their rock-like support and assistance. Thanks are also due to all the participants from our Pune city and from all over India, including our very own senior colleges teaching staff, for actively participating in this FDP. We hope that the same tempo of e-content development continues and expands widely. Thanks are also due to all those who have contributed in the conduct of this FDP, but whom I may have missed out. Thanks to one and all. लैपटॉप को उस लैपटॉप को हाँ इधर दो दो वीडियो जो रहे ना कल मैं कर दूँ आजा आजा सेटअप हटा रहे हैं आजा जल्दी आजा अरे उठना खड़े हो डायरेक्ट डायरेक्ट तो इसका पढ़ेंगे नहीं ना हिंदी वाले देखो अगर हो गए होंगे आ रहे होंगे तो ठीक है नहीं तो कर रहे हैं ना उधर बैठो हाँ ना उधर सेटअप लगाओ सर्टिफिकेट देना है इस पर इस पे लिखेंगे आप हाँ सर सर एक्सप्लेन करने का सर क्या एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ एक्सप्लेन करने का सर 6 स्लाइड है मेरी अच्छा और वो स्लाइड में कुछ कुछ ऐसा सिंबल जैसे फोटो है उसको एक्सप्लेन करना है मेरे सर लेकिन क्या 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 एक्सप्लेन करना है देख सकते हैं
कहाँ पे पीपीटी एल्गोरिथम्स इस पर डायरेक्ट सेटिंग होता है मोबाइल का कैमरा हाँ सर। तो हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसए के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या होता है। डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये वो पार्ट है जो हमें लाइफ में हमारे बहुत काम आता है और इससे हमारे बहुत सारे काम जो इजी हो जाते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, उसमें से हमें बुक निकालनी होती है कि इस बुक हमें इधर से निकालना है, तो हमें हमें फाइंड करनी नहीं होती है। हम उसका नाम देख के, उसका रॉ देख के उसको उधर से निकाल लेते हैं। तो ये लैंग्वेज ऐसी होती है जिसे हम वहाँ से हम वो चीज़ को निकाल सकते हैं। तो हर चीज़ में हमें एल्गोरिदम की नीड होती है। तो वो एल्गोरिदम को हमें पढ़ने के लिए 3 लैंग्वेजेस होती है। जैसे इसमें फर्स्ट लैंग्वेज है जावा, पाइथन और C++। तो जावा जो होती है वो ये हमें एपीआई के लिए हेल्प होती है, और पाइथन हमें होती है मशीन लर्निंग एआई के लिए, और C++ जो होती है वो गेम के लिए होती है।
गेम के लिए होती है। और डीएसए इन सब से हम हर लैंग्वेज से डीएसए कर सकते हैं, जैसे जावा से भी कर सकते हैं, पाइथन और सी प्लस प्लस से भी हम कर सकते हैं उसे। और उसके बाद जो हमें इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसमें है नेटवर्किंग होती है, डीबीएमएस होता है और ओएस होता है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये लैंग्वेजेस पढ़ के हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन पे जॉब और प्लेसमेंट मिल सकती है। और इसके बाद इस कोर्स को करने के बाद हमें क्या क्या, हाँ, जो हमें जावा पढ़ने के बाद हमें क्या क्या नीड होती है, और ये सब इसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये हमारा सबसे अच्छा लैंग्वेज अगर मैं प्रेफर करूँगा तो ये है। और उसके बाद ऐसे एक्चुअल में क्या है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और इसमें प्रैक्टिस करने की हमें बहुत नीड होती है। जैसे लीड कोड होता है, एक लीड कोड करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद गाइडेंस भी हमें मिलती है बहुत सारे इसमें से। और उसके बाद जो है कि एल्गोरिदम, जैसे मैं आप बोलो कि कोई भी चीज़ को जो हमें इजी करने के लिए जो एल्गोरिदम की नीड होती है, तो जो एल्गोरिदम के बिना हम मतलब कोई भी काम हम कर नहीं सकते उसे। तो ये एल्गोरिदम के साथ हम हर काम को अप्लाई कर सकते हैं मतलब। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वो है, अगर हम सपोज़ कीजिए अगर हमें 6 बजे उठना है, हम 6 PM को हम उठते हैं AM में, सॉरी, तो वो जब वो टाइम होता है तो हम उससे उठ, जब वो अलार्म जब बजता है तो हम उससे उठ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, या तो अलार्म को हम ऑफ कर सकते हैं या तो हम उठ सकते हैं, ये 2 चीज़ें इसमें आती है। और सेम यही है, क्या आज हमें मॉल जाना है या कहीं और जाना है, तो हम 2 चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमें इधर जाना है या हमें इधर जाना है। इसके बाद हिप्स क्या होता है? हिप्स आप एक वो देख सकते हैं कि एक पहाड़ हो सकता है ऐसा, अलग अलग होती है। 70% वाले लोग की अलग होती है, और जो 80% वाले लोग की अलग होती है। तो वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो फाइंड कर देता है और उन्हें जो है उन्हें एडमिशन और सीट देता है। सीट हमारी, जैसे हमारे बीमवॉक में जो है 50 सीटें अवेलेबल होती है। अगर 100 बच्चे का एडमिशन होता है हमारे इसमें, तो उसमें से हम जो टॉप 50 है उन लोगों को ही हम एडमिशन लेंगे ये मतलब ये साल में। तो ये भी चीज़ होती है। और ये जो क्वीन करके है, इससे हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक लाइन बोल सकते हैं हम, जैसे कोई भी चीज़ की एक लाइन होती है, एक लाइन के तौर पे हम इसे बोल सकते हैं। स्टैक क्या होता है? स्टैक, हम कोई भी डेटा को एक के ऊपर हम स्टैक कर सकते हैं से स्टैक के फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जो हमें सॉर्ट करने पड़ते हैं। से मैं इससे पहले आपको एग्जांपल दिया हूँ कि 60% वाले लोग जो अलग होते हैं, 70% वाले अलग होते हैं, 80% वाले लोग अलग होते हैं। तो ये स्टैक के फॉर्म में जो हमें मिलता है डेटा, उसको स्टैक के फॉर्म में अगर हमें डेटा मिलता है तो उसे स्टैक बोलते हैं हम। हाँ सर, थैंक यू। We are in the terminal session of this faculty development program. हम अंतिम चरण में हैं। मैं निमंत्रण देता हूं अपने वाइस प्रिंसिपल को
कि वो स्टेज पर आ जाएं। वॉल्यूम बढ़ाते क्या? आप लोग सब किस हाल में हैं इसका सबको इल्म है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आगे की कार्रवाई को अंजाम देता हूं और सर्टिफिकेट वितरण समारंभ अभी शुरू करते हैं। जो आउटसाइडर्स हैं उनको सर्टिफिकेट हम दे देंगे, उनका नाम हम बुलाएंगे। आप लोग ज़रूर सामने आइए और हमारे वाइस प्रिंसिपल से गुजारिश करता हूं कि उनके हाथ में ये सर्टिफिकेट हवाले करते हैं। संतोष नथुलिंग जंगम सर, इन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग में सबसे एंथुसियाज्म से पार्ट लिया। गर्गी वसे, श्री सुहास अंकुश पाटिल, श्री तुषार पंडितराव देवरे, आप बड़ी दूर से सफर करके आए हैं, हुलिया से है ना सर? डॉक्टर भरत करदक, सर या ना सर, सर या। नयना छोटू लाला बोरसे, मिस्टर पंकज शिंगोटे, श्रिया दातार, स्वाति वजे, और गौरी पेडनेकर। सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन अब खत्म हुआ। अभी हम गुजारिश करेंगे हमारे वाइस प्रिंसिपल से कि वो कुछ वैलिडिटरी एड्रेस कर। बैठ के करो, भाई देखिए, मुशर्रफ हुसैन सर ने पहले ही आपकी तरफ से बता दिया है
कि आप लोगों की तबीयत कितनी बेचैन है, और आज ही नहीं बल्कि कल से आप लोग ये बैठे झेल रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा सोर्स है जिसने पूरी दुनिया को न सिर्फ ये कि एक कर दिया है, बल्कि सबको एक दूसरे के सामने खोल दिया है। अब दुनिया में कोई चीज़ न तो छुपी हुई है और न ही कोई चीज़ बंद है, और ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम बहुत दूर हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते। दुनिया के हर कोने, हर कॉर्नर से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ कि वो इसी मीडिया से अपने देशवासियों से अपने मन की बात करते हैं, और जो कुछ उनके दिल में होता है वो अपने लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, पहुंचते भी हैं और पहुंचाते भी हैं। और यहाँ तक कि इसी मीडिया ने पूरी दुनिया, बल्कि हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने इसी ज़रिए से चंदा मामा से भी आपकी मुलाकात करा दी है। आपने सारा सीन उसका इसी से देखा है, और इसरो से बैठकर हमारी टीम ने इसी से उसको कंट्रोल किया है। और सबसे असल बात यह है कि दुनिया में जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो असल सोर्स हर ज़माने में रहा है वो आप हैं। आप हैं, आप। ये सोर्स आपने ही बनाया है। तो असल सोर्स आप यानी टीचर्स हैं, और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए हर लिहाज से मॉडल बनना चाहिए। और इसके ज़रिए हम कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ये न तो ज़ुबैर साहब बता सकते हैं और न ही कुलकर्णी सर बता सकते हैं, बल्कि ये अपने ऊपर है कि हम कितना इससे फ़ायदा हासिल करें। मैं एक नाथ कोहने साहब, कोरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, भूषण कुलकर्णी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंग्लिश साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोरे साहब जब आए थे 15 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने पहचाना क्या? मैंने कहा आप वही हैं जो 2019 में जिस चीज़ का मज़ा चखा कर गए हैं। तो कहने लगे सही पहचाना सर आपने। तो बोले मैं अभी उसका पूरा सिस्टम और स्टूडियो और उसकी पूरी टेक्निक सिखाने के लिए आया हूँ, और उसका पूरा एडवांस सिस्टम जो हो सकता है वो देखिए। वो आए, 3 दिन यहाँ रहे, और जाहिर सी बात है कि हम उनकी कोशिश और उनकी मेहनत का न तो हम कुछ हदिया दे सकते हैं, और न ही कुछ जो है उनके बारे में कुछ हम ज़्यादा इजहार कर सकते हैं। उनका हदिया, उनका गिफ्ट और उनकी मेहनत का नतीजा और फल आपके हाथों में है। आप जितना इस मॉडर्न सिस्टम से फ़ायदा उठाएंगे, उनको इससे खुशी हासिल होगी और उनकी मेहनत भी वसूल होगी। तो मैं इन तमाम लोगों का, और मुशर्रफ सर का और ज़ुबैर सर का, और सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख साहब, जो हर वक्त हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाकर चंद्रयान के ज़रिए चांद तक पहुंचाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने उनसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट किया है कि सर इस तरह काम नहीं चलेगा, बल्कि एक स्टूडियो हमारे कॉलेज में कायम किया जाए और हमको मौका दिया जाए, हमारे टीचर्स को, हमारे साथियों को, कि ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह प्रिंसिपल साहब बहुत जल्द आपको एक स्टूडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उनको फिर यही शिकायत होगी कि हमारा कोई टीचर उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर सबका
अपनी इस टीम का भी और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंसिपल का भी, और जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो एनर्जी का ज़रिया बनती हमारी मैनेजमेंट अंजुमन खैरुल इस्लाम, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ज़ुबैर साहब इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला हमें और हमारे और आपके इल्म में इजाफ़ा और बरकत दे, और हम और आप सब इसी ज़रिए से यहाँ बैठकर नहीं बल्कि वीडियो के ज़रिए हमारी आपसे एक दूसरे से मुलाकात और बात होती रहे। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रिंसिपल साहब की तरफ से कह रहा हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और इसी के साथ ही इस प्रोग्राम का कंक्लूजन होता है। आप लोग अपने सामान उठाइए, देखिए कि आपके ही हैं वो, और बखैर घर पहुंच जाइए। थैंक यू वेरी मच, एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टाफ विल बी गिवन tomorrow or day after.